do so within 7 days. List only when such application is filed. Appropriate application as prescribed under law is filed. In compliance to the order dated 29/1/2024, affidavit of Principal Secretary dated 20th of February 2024 is filed. Okay, yes, sir. In this affidavit, we have stated that this case of the petitioner for grant of DA Ji. is under consideration and subject to consultation with the finance department, it will be processed and it will be taken to its logical conclusion. Within what time? Although we sought 4 to 6 month time as per 6? 4 to 4 से 6 महीने का. अरे सर इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके इनका एक लेटर देख लें सर. अरे एक मिनट रुक जाइए सर. इन्होंने पहले सैंक्शन कर दिया इसको. ये जो कह रहे हैं इट इज कॉन्ट्री टू देयर. हमने बाद में हमको एक लेटर हाथ आया. कहाँ है वो लेटर हमने बताइए. लगाया सर वो अलोंग विद IA 2639. 2639 यस. हाँ ये 19 फरवरी को हमने फाइल किया है जी. मालूम में जस्ट काइंडली हम लोग उसमें पहले 2019 में सैंक्शन कर चुके हैं. उसके बाद भी दे नहीं रहे हैं और अब ये कह रहे हैं 4 से 6 महीने. ये देखेंगे सर काइंडली. ये दिस लेटर वी गॉट होल्ड ऑफ सब्सिक्वेंटली. हाँ देख लिया है रिकॉर्ड पर. और इसमें इन्होंने 19 में कह दिया कि इनको देना है. आपने यही सवाल इनसे पूछा था कि जब ये ट्राइबल में थे तो आप देने को तैयार थे. अगर महिला ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को चला गया तो क्यों डिपार्टमेंट में डिफरेंस हो जाएगा. एफिडेविट दीजिए. कभी आया नहीं. आपने क्या आज सुबह ही फाइल किया है क्या 2765 है आपका आइए नंबर एफिडेविट का. आइए अपना रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट नंबर 2765. वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे. 2765 जी. क्या कहते हैं आपके PS देखें जरा. उनसे ये तो पूछ लीजिए कि इन्होंने ये आदेश पढ़ा कि नहीं पढ़ा. ये वाला तो पहले शासन जारी कर चुका है. यह जो आदेश पहले शासन जारी कर चुका है इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि बिगर फाइल पढ़े. इसको पासवर्ड में रख रहा हूं. उनसे पूछ लीजिएगा ठीक है कि ये जो 27/2/19 का आदेश है उप सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग का, इसको इन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा. पूछ लीजिए. मैं रिप्लाई की कॉपी देने कोर्ट में अंडर किया था को अवेलेबल नहीं मिला जी. कौन अवेलेबल नहीं हो रहे. हाँ सर मैं हाई कोर्ट रूल्स में क्या प्रावधान है. मैं कोर्ट में भी दे देता हूँ क्योंकि क्या हुआ है सर पहले 19 में भी अब जब लास्ट टाइम कोर्ट ने ऑर्डर किया कंटिन्यूसली वकील साहब को फोन किया वो पिक. आप रजिस्टर्ड डाक पे भेज देते ना. नहीं मैं इसी कारण या रजिस्टर्ड डाक का प्रावधान है ना हाई कोर्ट रूल्स में that if the counsel is not or party is not available you will send it on the. अवेलेबल तो है वो. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 19 में थी. उसके बाद अभी बार बार फोन करे थे मुंशी जी ने इसमें लिखा भी वकील साहब फोन नहीं उठा रहे. इसका मैं कोर्ट में भी देने तैयार. कोर्ट में दे दीजिए अभी. दे दी सर. दोनों 2 रिप्लाई दोनों मैंने दे दी. अब क्या कब बच्चा लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे पिटीशन एडमिट हुई थी. अब अगर जैसा कोर्ट आदेश करे. नहीं तो पिटीशन तो एडमिट हो गई. इसको रखना है क्या बताइएगा. नेक्स्ट वीक में कोई भी डेट दे दे हमारा. नेक्स्ट वीक में क्या फाइनली हम करने को रेडी हमारे इसमें. अरे भाई नेक्स्ट वीक में कोई भी डेट दे दे. हैं नेक्स्ट वीक में कोई भी डेट दे दे हमारा. अच्छा नहीं आप इसका रिजॉइंडर फाइल करना है ना. मैटर क्या है. Sir, he was a daily rated employee. We have terminated the services जी. on the count that his appointment was illegal. When he preferred, now on the first round of litigation, the writ petition is allowed ex parte matter, as in without hearing the Mandi part, the answering respondent. We preferred a writ appeal. The writ court directed, by setting aside the order of the honorable single bench, they directed to decide his representation. Now we decided the representation, took into account all the aspects that his initial appointment itself was illegal and it was only a daily basis. So we paid him the compensation and have retrenched him. Now
He preferred an appeal against that before the Mandi board. That is dismissed, and then he preferred another appeal Okay, before the state Shri. government. That is also dismissed. विनय प्रताप सिंह विनय प्रताप सिंह है ना विनय प्रताप सिंह has been given copy of both the replies by Shri Rohit Jain in front of the court. Therefore, this plea of non-availability of reply is no more available. ये तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते थे अगर आपकी मंशा होती तो full stop. Learned counsel for the petitioner fairly admits that it was filed in the year 2009 could have been downloaded by him through online mechanism, but he admits that he had not downloaded the same and allowed about more than 4 years time to lapse. Next. Now, by way of last indulgence, 7 days time is granted to file rejoinder. List thereafter. This case is covered, fully covered by WP number 15680/2017. कॉपी दे दीजिए नहीं, इसमें हमने पिटीशन में मेंशन किया सर, ये कॉपी भी है। कॉपी दे दीजिए मैं लगाई आपने कॉपी हाँ नहीं, उन्होंने उसको पूरा पैराग्राफ कोट कर दिया। जी जी दे दीजिए उसके बाद देखिए सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, हाई कोर्ट का ऑर्डर है सिंगल बेंच का है डिवीजन बेंच का है फुल बेंच का है जी सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इतना बताइए ठीक है ना नाम हाँ नाम ना लें कृपा कर सॉरी, इसमें सर डिवीजन बेंच ने हेल्प किया। जी पैराग्राफ आई में इनका कोई रिप्लाई नहीं। पैराग्राफ 18 एक सेकंड पेज 7 ऑफ पिटीशन, पैराग्राफ 18। एक सेकंड क्या पैरा नंबर 18, 19, 20 पढ़िएगा Still further, the petitioner have not included such clause prior to selection or even in the present petition, having participated in the selection process wherein 1961 rules were adopted in respect of selection process for the post of district judge entry level. The petitioner are stopped to challenge to change option of such clauses for the purposes of the eligibility and the disqualification. Having said so, we find that if such was the eligibility condition, it was mandatory for the High Court to seek information about the number of children in the application form itself. The eligibility of the candidate has to be satisfied before the candidate is permitted to appear the examination and undergo the selection process. Since the High Court has not sought the information in terms of 1961 rules, the participation application form WB number so and so not open to the High Court to declare candidate eligible for the reasons that candidate has more than 2 children. As such, information was not educated in the application form. The Supreme Court in Shri Krishna's case Supra has held that the head of the department, not the university authority, took care of scrutinization and admission from then the question of the candidate committing not did not arise. Keeping in view of the said principle, in the absence of any information sought from candidate in respect of eligibility of having more than 2 children, as on 26 January 2008, it is the High Court which has failed to aggregate relevant information to determine eligibility of a candidate and disqualification of candidate from facing the selection process itself once the petition have been subjected to selection and subsequent appointment. Then the cancel candidate unreasonable action of the High Court find. Consequently, the order of termination 7 September 2017 set aside both the writ petition stand allowed. The High Court is directed to reinstate the petitioner and grant all consequential benefit except salary from the date of termination till the date of reinstatement. The respondents are directed to comply the order passed by this court at the federal within a period of 1 month. उसके बाद फर्दर ऑनरेबल हाई कोर्ट इन सिंगल बेंच ये एक सेकंड तो समझना चाहता हूँ सर, ये देखो
जी, आप किस पद पर हैं? ट्रेनिंग ऑफिसर। ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर आईटीआई मऊगंज। यस अब ये जो डिवीजन बेंच का मनोज कुमार वाला जजमेंट है, जी सर। दैट इज इन रिगार्ड टू द जुडिशियल एम्प्लॉइज, जुडिशियल ऑफिसर्स। वो उसमें भी दो बच्चे का दो के हाँ ऊपर ठीक, बच्चे नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। वहां उन्होंने ये कहा कि 1961 के जो नियम है वो जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर लागू नहीं नहीं होते। होते। ठीक है, इसलिए ये ऑर्डर तो लागू नहीं होगा, ये जजमेंट इसके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक उसके है, बाद वो देख लें, फैक्चुअल आस्पेक्ट भी देख लें। हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। सर- आप इस बात से एग्री करते हैं ना, ये दोनों ऑर्डर्स जुडिशियल ऑफिसर्स के हाँ, हैं, judicial दे विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ हमने द रेशियो केस। उसको वहां से लिया सर, हाँ। कि बच्चे दो से ज्यादा, उनके 5-5 बच्चे थे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेट हाँ, लॉर्ड वो- प्लीज सी ये एक सेकंड, ये जो तीसरा जजमेंट आपने दिया संतोष दलाल वाला, ये इसमें पैरावाइज रिप्लाई नहीं था, उसका डिनाइल नहीं है सर। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो हमने पैराग्राफ कोट किया उसका डिनाइल नहीं है रिटर्न। जी इसमें सर शोकाज नोटिस का रिप्लाई हमने दिया सर, वो देखें P6 उससे क्लियर हो जाएगा। पीछे जी बताइए। पेज 33 जी में आई परमिट टू रीड। हाँ प्लीज प्लीज। बिंदु क्रमांक एक प्रार्थनी को नियुक्ति के समय 3 संतान होने का दोषी एवं नियम 1961 के नियम 6 के उपनियम 6 के विपरीत नियुक्ति हेतु अपात्र बताया गया है, जबकि इसके बारे में मेरे द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि मेरी ना तो आवेदन के समय ही ना ही कार्य ग्रहण करने की समय तीसरी संतान जीवित संतान थी। इसके लिए मैंने पूर्व में हुई जांच 28/6/2013 को अपना पक्ष ठीक है, गोद दे चुकी थी, गोद देने से नहीं होगा। मिला। ठीक है ना, आपकी नियुक्ति दिनांक क्या है? नियुक्ति दिनांक है सर ये P4 16/1/2013। एक सेकंड, P4। यस, इस समय हमारी कोई तीसरी हाँ संतान ठीक है ठीक है ठीक है, 16/1/13 13 पेज 23 मिला पिटिशनर्स डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यस मिला। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कब चालू हुआ था? ये कैसा क्या चीज? सिलेक्शन प्रोसेस कब चालू हुआ था? सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था 2012 में सर। कब हुआ था, डेट बताइए। ये एनेक्जर P2 है। हाँ, एडवर्टीजमेंट हुआ होगा ना इस पद के हाँ लिए। हाँ सर ये P2 है। हाँ 2012 12 सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था। जी इस समय हमारी 2 ही संतान थी। हाँ ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यस ये तीसरी संतान को गोद कब दिया आपने, जैसा P6 में लिख रहे हैं? ये इसकी डेट पढ़ेंगे। हमने गोद दिया है इनको। इसमें पैराग्राफ 2 में सर 12/2/2013 को मैंने अपनी पुत्री जैस्मिन सिंह को, पुत्री दिनेश प्रताप सिंह को, रामकृष्ण सिंह के पिता स्वर्गीय इतना को, जो कि कोपा तहसील मऊगंज चित्रकूट के निवासी, तो 12/2/2013 को गोद दिया आपने। यस ठीक है ना? जी सर। जी इसमें फिर लिखा ITI प्रशिक्षण परीक्षा आवेदन फॉर्म 27/3/2012 को भरा गया था। परीक्षा 22/4/2012 को कहाँ है गोदनामा? गोदनामा कहाँ है, वैलिड गोदनामा? हाँ सर गोदनामा है। और फिर 1961 का रूल पढ़ेंगे अपन कि उस रूल में क्या प्रावधान, क्या आवश्यकता है। ये गोदनामा P7 पेज 35 जी अच्छा, स्टैम्प पेपर वाला स्टैम्प गोदनामा। पेपर नोटरी के समय। जी 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 अच्छा, हमारा जो चयन है सर वो OBC अनरिजर्व में हुआ है। हमने कोई बेनिफिट नहीं लिया है OBC के होने का सर हमारा पता। नहीं, अच्छा, वो इशू ही नहीं। ओके। देखिए अभी इशू सिर्फ इतना सा है, तीसरी संतान का इशू है, मिला। बस अभी उस पे नहीं जाएंगे। जी सर। ठीक है ना? जी सर। अब आप नियम बताएंगे, नियम कहाँ पर है? नियम सर ये इसमें एडवर्टीजमेंट में मेंशन है। R1 है, सर्कुलर पढ़िएगा, सर्कुलर R1। हाँ मिल ये इसमें देखिए पेज 17 पे है सर 8.7 में। इसी में नियम में ये हाँ क्या लिखा है ये? जिस आवेदक की 2 से कोई भी अधिक होगा जिसकी संतानें पहले हों से एक जीवित संतान है, और जिसमें एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें। जी उस समय जिस समय फॉर्म आए तो उस समय हमारे 2 ही संतान थे। जी जी हाँ।
जी और ये हमारी तीसरी बच्ची का जो जन्म हुआ है 19/2/2013 को हुआ है। हाँ 19/2/13 को हुआ है। Yes, आपने 13/2/13 को गोद दिया है हाँ और 6 दिन बाद दूसरी बच्ची का जन्म हुआ है। जी सर। जी तीसरी बच्ची का जन्म हुआ है। जी जी परीक्षा के समय नहीं, परीक्षा के समय 2 ही बच्चे, ठीक है चलिए। सिलेक्शन के समय भी 2 ही बच्चे। जी ये बताइएगा भटनागर साहब। But my submission is that this is a clear case of violation of the policy जी because admittedly, my lord, the third child is born, my lord, after the selection. जी Selection was in the 2012. जी And this annexure R on kindly be seen, my lord, that is the gazette notification in the year 2006. यस हाँ This is dated 5/7/2006, my lord. It is an amendment. जी Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to service who has already one living child and the next delivery date placed on or after 26 January 2001 in which 2 or more than 2 child are born. हाँ मतलब अगर ट्विंस हो जाते हैं या ट्रिपलेट हो This is जाते हैं benefit to only this kind. दोज हाँ अब 2001 का नियम का 2001 का नियम दिखाइएगा। That advertisement, my lord, may kindly be seen. एनेक्चर P2 Next year P2, यस which is relevant हाँ पढ़िएगा clause 8.7, पेज नंबर इनका number 17 of the 17 17, clause 8.7. जी पढ़िएगा 8.7 जिस आवेदक की 2 से अधिक संतानें हों जिसमें से एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ऐसे उम्मीदवार आवेदन ना करें। जी But with open eyes, मतलब this clause was there यस in the knowledge of the petitioner. जी वो तो उसको कैमोफ्लेज करने के लिए थर्ड चाइल्ड उन्होंने एक बच्चा गोद पकड़ा दिया। जी आपसे सलाह लेकर गोदनामा बनाया उसने। नहीं सर, उससे पहले हो चुका था सर। आप ज्यादा होशियार है वो। हो जाता। चलिए लिखिएगा दिस पिटीशन इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर डेटेड 19/11/2019 annexure P9 passed by the Director of Skill Development Madhya Pradesh, whereby petitioner who was appointed as a fitter, as training officer within bracket fitter in the government ITI Mauganj Rewa was has been directed to be removed from the service in terms of the provisions contained in Rule 8 within bracket 4 of Madhya Pradesh Civil Service bracket में General Conditions of Service bracket close Rules 1961 दीजिएगा प्लीज ये। Police on account of having more than 3 living children and also on account of finding that the petitioner had used a forged OBC's caste certificate. Next para. Shri Verma submits that petitioner was not having more than 2 living children at the time of appointment and draws attention of this court to the fact that advertisement annexure P2 was issued in 2012. Full stop. Petitioner was given appointment order on 16/1/2013 as contained in annexure P4. Full stop. In this list, her name appears at
serial number 25. Page 25. 25, and she has been shown to have been appointed under the OBC category. Full stop. UR. हैं? OBC UR. OBC UR कहाँ लिखा है? लिखा ना आरक्षित बटे अनारक्षित. नहीं नहीं, इसमें OBC लिखा है, पेज सीरियल नंबर 25 पे नाम पड़ेगा, P4 में OBC लिखा है. इन्होंने यहाँ पे OBC लिखा है, पर हमारा जो सिलेक्शन अनारक्षित में हुआ. वो कहाँ से मालूम पड़ेगा आपका अनारक्षित में हुआ है सिलेक्शन? कहाँ है वो आपका सिलेक्शन? ये जो रिजॉइंडर है सर, हाँ, रिजॉइंडर में हमारी जो इंक्वायरी हुई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे मैंने सबमिट किए. प्रश्न पूछे नहीं, आपका जो वो दिखा दीजिए, वो नहीं है ना. फुल स्टॉप. नहीं. Next paragraph. Petitioner's contention is that petitioner had already given her second child in adoption by adoption deed drawn between Ram Krishna Singh alias Ramkesh Singh, son of Shri Raj Bahadur Singh, and Srimati Mithilesh Kumari, wife of Shri Ramkrishna, and Dinesh Pratap Singh, son of Vijay Bahadur Singh, and Srimati Maya Devi, wife of Dinesh Pratap Singh, White, gift deed dated 12/2/2013, full stop. And thereafter, another daughter was born on 19/2/2013. Therefore, the third child has been treated by the petitioner to be a second child by virtue of said Godnama as contained in Annexure P7 dated 13/2/2013, and on such plea it is submitted that provisions of the GAD provisions contained in the advertisement Annexure P2 which prohibited White Clause 8.7 candidates from applying who were having more than 2 children, out of whom one was born after 26/1/2001 from for appointment will not be applicable to the facts and circumstances of the case. Next paragraph. Shri Piyush Bhatnagar, reading the same clause, submits that petitioner has tried to camouflage the whole situation. She was already pregnant. Her third child was admittedly born on 17 February डेट आई है ऊपर, 18 February क्या डेट आई है? अभी लिखा ही है मैंने. 19/2/2013. 7 days prior to that, she had given her second child in adoption. So to come out of the clutches of the provisions contained in the advertisement and which have become part of the statutory requirement. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that Rule 8 within bracket 4 of the Madhya Pradesh Civil Services bracket में General Conditions of Services bracket close Rules 1961 provides that services of a probationer may be terminated during the period of probation if, in the opinion of the appointing authority, he is not likely to shape into a suitable government servant. Full stop. This being the legal position, comma, and there being two aspects, namely violation of the provisions which prohibits third child after 26th January 2001, with only an exception that
if during the second delivery children are born as a twins or a triplet or so on, then they will not be treated to be more than 2 children, comma, merely giving a child in adoption 7 days prior to the third delivery will not be a sufficient circumstance to treat that petitioner was not having 3 children, full stop. Even otherwise, there is a finding that the caste certificate on the strength of which petitioner had obtained appointment was found to be false, and thus when examined, then discharged simpliciter by the impugned order without casting any stigma on the petitioners cannot be said to be arbitrary or illegal, full stop. Petitioners' reliance on the judgments of this court in case of Basant Kumar Gupta and other connected matters WP 11740/18 decided by Honorable Division Bench of this court on 7/8/2019 and that of another division bench in Manoj Kumar versus State of Madhya Pradesh and another in WP 15680/2017 are in regard to judicial officers, and the division bench has held that the rules of 1961 are not applicable, full stop. Since that issue is wide open as to whether the rules of 1961 will be applicable on Madhya Pradesh judicial services or not, comma, however, these judgments on which Shri Verma has placed reliance will be of no assistance to the petitioner in as much as it is not the petitioner's case that the rules of 1961 will not be applicable to the case of the petitioner who was appointed in a civil post under a civilian department. Thus, petition fails and is dismissed. नहीं रहने दीजिए जजमेंट, इसको लगाइए ना, फाइल में लगाइए ना. Number 10. May I please about? But this is after notice matter, madam. जी जी, इसमें मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बताना है आपको. जी, madam. Madam, what has happened in this matter that one civil suit was filed by the defendant, madam, that is by the respondent, that is the plaintiff before the trial court. The suit was decreed in favor of the plaintiff. Thereafter, the appeal was preferred. The appeal court remanded the matter back to the trial. 23 का आवेदन है ना जी, इसमें. 23 में डिग्री पास हुई. हाँ. Thereafter, my lord, the learned trial court put a condition of getting the same registered, my lord. Thereafter, we preferred the review, my lord. The review was also dismissed. नहीं, इशू ये है कि इसकी सिविल रिवीजन लगेगी. आज इशू सिर्फ इतना सा है, सिविल रिवीजन लगेगी कि मिसलेनियस पिटीशन लगेगी. Section 96 subsection 3 of दिखाइए. CPC, my lord, very clearly says that no appeal is maintainable. नहीं, सिविल रिवीजन और मिसलेनियस पिटीशन अपील तो नहीं लाया करेगी. My lord, कंप्रोमाइज डिक्री की अपील नहीं होती है. नहीं. Order 23 Rule 3 deals with compromise decree. My lord, even Issue is that if there is any error in the compromise decree, My lord. then that error will be subject to correction in a civil revision or in a miscellaneous petition. my lord, Now, you are required to address on this aspect because the office objection is that miscellaneous petition is not maintainable. अगर आपको तैयारी करना है तो कर लीजिए, लेकिन इस इशू के ऊपर एड्रेस करिए डायरेक्टली. that I will do, my lord. In fact, I have made certain research, my lord, whereby, my lord, identical matters and identical issue, my lord. Whether this issue has No, been my lord, addressed. it has not been addressed. लिखिएगा. My lord. Shri Anurag Gohil, Learned Counsel for the petitioner. This miscellaneous petition is filed being aggrieved of the order dated 5/10/2023 and 17/12/21, comma, filed as Annexure P3 and P4 respectively in MJC number 35 of 2022 and RCSA 900648 of 2008 by the learned 10th Civil Judge Junior Division Bhopal, whereby in a compromise decree under Order 23 Rule 3 CPC,
trial court directed for compulsory registration of the decree. Next para. Issue herein is that office objection has been raised as to the maintainability of the miscellaneous petition. Next para. The issue which emerges for consideration is that whether a civil revision will be maintainable in terms of the provisions contained in section 115 of CPC, or a miscellaneous petition will be maintainable. Full stop. Because this issue needs to be dealt with before adverting to the merits of the compromise decree. Full stop. Shri Gohil prays for and is granted कितना समय चाहिए आपको? मतलब 1 week. 1 week time to examine this aspect, that whether civil revision will be maintainable or a miscellaneous petition. Full stop. जैसे हम आपको अभी से बता देते हैं, सिविल रिवीजन मेंटेनेबल होगी, My lord. क्योंकि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होता तो मिसलिनियस पिटीशन होती है, जिससे either way petition will be finally disposed of, so it will be civil revision. My lord, I'll make a research. If I hold that the order of the impugned order is correct, then also your petition will be disposed of, proceedings will finally be decided, and if I hold that it is not correct, then only that part will be eliminated, but still that compromise decree will hold the field, and therefore civil revision will be maintainable. My lord, I'll make the research, but कर लीजिएगा, जी. कर there लीजिएगा. are certain judgment जिसमें 227 entertain करी है by court. I'll do my. I'll do. देखिएगा, I'll do. देखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, एक पैरा और लिख लीजिएगा. The issue is that whether any decision by the High Court in regard to the core question which has been legally raised herein, that is, whether the trial court could have ordered for compulsory registration of the decree or not, will ultimately result in final disposal of the proceedings either way, and therefore what is to be examined is that whether the order impugned is of interlocutory nature or is of final nature, and that will determine whether civil revision is maintainable or a miscellaneous petition is maintainable. Full stop. Shri Gohil fairly admits that the judgments with which he is armed today, though shows that such petitions have been entertained under Article 227, but this aspect has not been considered in them. He prays for and is granted 7 days time to carry out further research. I'm obliged. Great. My lords, this matter also issue of maintainability has been raised. Lords, I have done my research. Lords. What has happened that my application was under Order 7 Rule 11 A and B, but I am only claiming a relief under Rule B. Now, Rule B, if my application would be allowed, the suit will not come to an end. What is Order 7 Rule 11B? Where the relief claimed is undervalued and the plaintiff, on being required by the court to do so, correct the valuation within a time to be fixed by the court. So I am only playing that the time may be fixed. I am also. ठीक है, लिखिएगा. Shri Prakhar Naveria, learned counsel for the petitioner, submits that the office objection may be overruled in as much as petitioner had filed an application under Order 7 Rule 11 within bracket small b. My application was under A and B, but I am only claiming for B. तो फिर आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए वहां पर. I'll permit you to file an application only under B. ठीक है. Prakhar Naveria, after arguing for some time, prays for withdrawal of this petition with liberty to file a fresh application only under Order 7 Rule 11 within bracket B. I'm okay. Earlier order will not come in the way of the petitioner filing the second application. Wait, please, my lord. My lord, the prayer made in the present writ petition, my lord, it's with respect to an order by which, my lord, closure of the right to lead evidence has been closed by the labor court, my lord. इतने सारे डिफॉल्ट तो दूर कर लीजिए. My lord. ये पन्ने तो सही कर लीजिए. लिखिएगा श्री अभिजीत अवस्थी प्रेस फॉर. कितने समय में करेंगे? Within 3 days. Prays for and is granted 7 days time to cure the default pointed out by the registry.
list thereafter. None for the petitioner. Cases that don't list after 4 weeks. माय लॉर्ड आई प्रे माय लॉर्ड 9/9/2021 को मैंने ऑर्डर फाइल करना है सर 2 वीक टाइम. Petitioner's counsel is praying time to file some documents. Is granted 4 weeks time to do the needful list after 4 weeks. Taking benefit of leave encashment 300 days one. 300 days वाला order है ना? Yes. Petitioner attained age of superannuation from the school education department. He is now claiming benefit of finance department circular which permits encashment of leave up to 300 days. Full stop. Petitioner's contention is that he attained age of superannuation. कब retire हुए आप? Sir, 21/3/21. On 31/3/21 and therefore he is entitled to the benefit of finance department circular of 2018 की डेट है, देख लीजिएगा. इतना नेक्स्ट पैरा. ये ऑर्डर लगा हुआ है. नहीं वो अपना वाला ऑर्डर करिएगा, ये ऑर्डर मत करिए. कंसीडर एंड डिसाइड. 15 दिन 60 दिन. दिस कोर्ट हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स. सर ये रिव्यू पिटीशन थी. ये क्या थी? रिव्यू पिटीशन है सर. बताइए. से 22/1/2024 का ऑर्डर है सर आपका. हाँ. उसके उसमें किया था सर. क्या गलती हुई है बताइए. सर इसमें एनेक्सर सर P24 देखेंगे सर. P24. P24 तो हाँ बताइए ना, इसमें क्या गड़बड़ी है? सर उसमें जो सर्टिफिकेट क्या है? आप क्या है? सर मैं वो उनका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हैं? मतलब मैं भी एक वो हूँ सर उसमें. क्या मतलब है? विक्टिम हूँ सर इसमें भी. विक्टिम कैसे हो जाएंगे इसमें सर मैंने उनके परमिशन अथॉरिटी लेटर लेके सर आर्ग्यू कर रहा हूँ मैटर पे. मैं किसकी अथॉरिटी लेटर लेकर? पिटिशनर के सर. कैसे, कहाँ प्रावधान है पिटिशनर की अथॉरिटी लेटर किसी और को देकर? CPC सर 1908. हाँ 1908. ऑर्डर नंबर 3 रूल नंबर 2. कौन सा? ऑर्डर नंबर 3. ऑर्डर 3. हाँ रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 देख ले, पढ़िएगा. ऑर्डर 3 रूल 2 पढ़िएगा प्लीज. पढ़िएगा वकील साहब, ऑर्डर 3 रूल 2 पढ़िएगा. The recognized agent of party by the whom such appearance Recognize agents parties by whom such appearances application and may be done.
persons holding power of attorney, authorizing them to make and do such appearances, the persons carrying on trade or business for and in the name of the parties not resident. कहाँ है power of attorney आपके पास में? सर अथॉरिटी लेटर लगाया था Authority letter नहीं लगता कोरे कागज पर. सर, वो पिटीशन में पीछे तो power of attorney ले आइएगा आप बनवाकर. ठीक है 1000 सर। रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनती है. ठीक है सर, ठीक है 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे power of attorney बना के ले आइएगा. ठीक है सर, हाँ? ठीक है। रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी लिखिएगा. श्री आपका शुभ नाम बताइएगा. अमित कुमार सिंह। Amit Kumar Singh, claiming himself to be recognized agent and pointing out towards the provisions contained in Order 3 Rule 2 CPC that recognized agents are permitted to file to argue this matter, comma, when pointed out that Order 3 Rule 2A provides that persons holding power of attorney authorizing them to make and do such appearances can appear on behalf of such persons, prays for time to obtain a registered power of attorney and present it before the court as a matter of authorization. He prays for and is granted. कितना समय चाहिए आपको? सर 1 वीक कर दीजिए। 7 days time to produce on record a registered power of attorney. थैंक्स। But petitioner worked, retired as work charge employee. He worked for 38 years. Issue in this matter- Retired as which employee? He retired as timekeeper, my lord. हाँ He is work charge employee. हाँ And the only issue in this petition is, my lord, Ji. that they have put a cap of 3,50,000 rupees on the payment of Gratuity Act formula, my lord. जी as per The formula of payment of Gratuity Act Hmm. says that the last payment drawn multiplied by 15 multiplied by time of service जी divided by 26. जी This is the payment of gratuity. जी But they have put wide order, kindly see P6, my lord. P6 yes. They have said that जी मजदूरी के कर के अनुसार उज्जैन राशि के भुगतान की दिनांक 1/22 से प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 3.5 लाख होगी. ये अधिकतम सीमा का कोई इज अगेंस्ट द अच्छा Yes, petitioner's contention is that petitioner is aggrieved of the order dated, order annexure P6 dated 27/8/2023 कब है? 21 हैं? 21 21 21 का तो नहीं है, तो अभी अभी बने भरत को चलिए 21 passed by the commissioner, housing commissioner in the name of and by the orders of the chairman of the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board, putting a cap on the maximum amount of gratuity which can be disbursed in favor of a daily wage employee. First off, it is submitted that this being contrary to the provisions contained in the Payment of Gratuity Act, he is challenging the same. Full stop. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks, to file a specific affidavit that how and under which provision of law statutory provisions of Payment of Gratuity Act 1972 can be overridden. Chaliye. My lord, petitioner is claiming for the leave encashment. Hmm. My lord, P4, where my lord, High Court, Honorable Justice have order on the P4, my lord, page 18. P4 में क्या कहा? My lord, इसमें हमारी petition allow हुई थी and GPF, GIS and leave encashment हमको allow किया गया था, देने के लिए कहा गया था. So far as the question of non-payment of GPF, GIS, leave encashment, etc. are concerned, it is true that upon termination of services, the past service of petitioner would stand forfeited, but GPF is nothing but a contribution made by the delinquent officer. GPF तो मिलेगा आपको, और क्या मांग रही हैं आप?
My lord, leave encashment and GIS. नहीं, लीव एनकैशमेंट नहीं मिलेगा आपको। But my lord, यहाँ पे इन्हें अलाउ हुई थी हमारी पिटीशन। उसको हम नोटिस हम डिस्टिंग्विश कर देंगे उसको। लीव एनकैशमेंट की पात्रता नहीं है आपको, आपको सिर्फ जीपीएफ की पात्रता है और जीआईएस का पैसा मिल जाएगा आपको क्योंकि वो बीमा था, ठीक है, वो आपका खुद का पैसा था। एंड लीव एनकैशमेंट नहीं मिलेगा, हम नोटिस इशू करके जवाब बुला लेते हैं। श्रीमती अंचन पांडे फॉर द पिटिशनर। Petitioner submits that petitioner is a terminated police employee. He is claiming benefit of GPF, leave encashment and GIS. Full stop. Reliance is placed on the judgment of a coordinate bench dated 5th September 23, passed in WP number 18341 of 23. To submit that under similar facts and circumstances. Petitioner is earlier one. My lord, ये हमारी पिटीशन। First round petition. In the first round of litigation. तो फिर अब क्यों आ गए आप दोबारा से? तो उसे रिजेक्ट कर दिया P2। GPF GIS उन्हें दिया बट लीव एनकैशमेंट उन्हें रोक लिया था। तो इन्होंने कहा था कि लीव एनकैशमेंट दिया जाए? कहाँ ऑर्डर है? My lord, page 30 page 30 of the petition। चलेगा, सॉरी, लास्ट की 2 लाइन पढ़ना। Petitioner had filed WP इतना 18341/23, which was disposed of by a coordinate bench, directing the respondents to pass a specific order in regard to entitlement like GIS, GPF, leave encashment, etc. Next para. This court thereafter petitioner's representation has been decided. Wide order annexure. My lord. Page 13, my lord. P2, my lord. Wide annexure P2. इनने ये ऑर्डर पास किया था माय लॉर्ड। देन माय लॉर्ड हमने कंटेम्प्ट लगाया था। अरे लगाया हुआ कंटेम्प्ट, इस ऑर्डर में क्या लिखा है वो तो पढ़ने दीजिए। कहाँ लिखा है रिजेक्ट करने का? चूंकि पूर्व में बड़े लाल पाठक के निलंबन अवधि का निराकरण नहीं किया गया था, अतः बड़े लाल पाठक के निलंबन अवधि दिनांक 23/11/12 से सेवा से प्रत्युचित आदेश दिनांक 17/12/14 तक दूसरी चीज बोल रहे हैं मैडम। सस्पेंशन का कुछ और लगा दिया, कुछ और लगा दिया आप लोग कागज। यही ऑर्डर उन्होंने पास किया था माय लॉर्ड। अब आप ये हमारा माय लॉर्ड, ये आप समझना नहीं चाहते तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्या लिखा? 10 का ऑर्डर है माय लॉर्ड। कोई बात नहीं, 5 तारीख की पिटीशन अलाउ हुई थी माय लॉर्ड। हुई होगी आपकी पिटीशन, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा? has been decided wide annexure P2, but annexure P2 is something else. There is no reference to the WP, nor there is any reference to the orders of the High Court in the said order dated 16/10/2023. My lord, Therefore, it cannot kindly be- see page 12, my lord. P2, प्लीज वेट करिए, बीच बीच में my मत lord, बोलिए। रिप्रेजेंटेशन हमने दिया था, उसके बाद उन्होंने हमको ये ऑर्डर ठीक है, आपकी जब इतना ही आप लोग नहीं समझते, यही दिक्कत है ना। हाई कोर्ट में वकालत करना इतना आसान काम नहीं है। आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं वही लिखा रहा हूँ कि इट इज नॉट अ डिसीजन ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन। प्लीज वेट। क्या लिखा? ऑफ द हाई कोर्ट passed in WP 18341 of 2023. Therefore, petitioner's contention that representation has been decided is not made out from the said order. Said order dated 16/10/23 is in regard to regularization of the period of suspension, and it has nothing to do with decision in regard to payment of gratuity, GIS and leave encashment. Therefore, since petitioner's representation is still pending before the authorities, this petition can be disposed of with a direction to the concerned authority to take into consideration the orders of the coordinate bench dated 5th September 2023 and decide petitioner's claim for payment of GPF, GIS and leave encashment through a speaking order within further period of 30 days from the date of receipt of certified copy.
My lord, the petitioner was retired at the age of 55 years, my lord. जी She was working as assistant, Anganwadi assistant, my lord. जी Pune post, my lord. जी By way of my annexure P7, my lord, page 22. जी My lord, she was appointed on the basis of my lord annexure P1, my lord, भारतीय निर्वाचन आयोग में इलेक्शन कमीशन ऑफ जी इंडिया के कार्ड के आधार पर, जी in which my lord date of birth my lord 1967 as shown, my lord. जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए तो क्वालिफिकेशन होती है 5वीं 8वीं 10वीं। At the time, आपका कहाँ है? नहीं अरे एक सेकंड वकील साहब, कब अपॉइंटमेंट हुआ था आपके पक्षकार का? my lord, appointment my lord 30 डेट आई थिंक 20/3/1996 my lord. हाँ तब कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी ऐसा आपका कहना है? क्या कहाँ का है आपने? मतलब उसी के बाद मैंने हमको ज्वाइनिंग दे दी my lord. अरे आपने वो तो बहुत अच्छा जबीरा हटा, जबीरा का my lord. हम आपसे जो पूछ रहे हैं सवाल उसका उत्तर दीजिए। my lord. आप आधार कार्ड के ऊपर अपनी आयु का निर्धारण कराना चाहते हैं, है ना? यही कहा ना आपने? नो my lord. हमारा जो मतलब इसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ है मतलब ऑसिफिकेशन टेस्ट नहीं, या तो ये बता दीजिए कि 96 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है? मतलब ऐसे ही रखा था my lord इसमें। आप हम इनसे पूछ लेंगे ना, और अगर मालूम पड़ा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी तो आपके ऊपर कॉस्ट लगाएंगे। अभी लिख दे रहे हैं हम, लिखिएगा। मतलब इसमें एनेक्चर जो P7 ऑर्डर एनेक्चर P7 पास्ड बाय प्रोजेक्ट ऑफिसर विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जबेरा डिस्ट्रिक्ट दमोह, वेयर बाय on the basis of the age of superannuation prescribed for Anganwadi Karyakarta oblique Anganwadi Sahika, that is at 62 years, Pune, my lord. It was decided to superannuate the petitioner with effect from 30/1/2022 on completion of age of 62 years. Next paragraph. Petitioner's contention is, कहाँ है आपका वो आधार कार्ड? मतलब आधार कार्ड नहीं, एनेक्जर P1 है my lord. इलेक्शन कमीशन का वोटर आईडी my lord. Petitioner's contention is that in her voter ID date of birth is mentioned as इसके बाद my lord हमें ट्रेनिंग भी दी। 2/11 कहाँ है आपकी डेट ऑफ बर्थ? मतलब इसमें तो केवल ये अरे आपके इसमें इलेक्शन आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ रहती है ना? डेट ऑफ बर्थ ईयर बस तो फिर क्या है? कटा 1967 आ रहा है। Is 1967 and therefore she could not have been retired from service in the year 2022. Next paragraph. When this court asked Shri Kurmi to point out as to what was the minimum prescribed educational qualification for appointment of an Anganwadi Sahika in the year 1996, he submits that no educational qualification was required for appointment as Anganwadi Sahika in the year 1996. जब प्यून की पोस्ट पे थी my lord। अच्छा तो आपको रिटायर तो साइका से किया गया है। मतलब वो कहाँ है प्यून का नियुक्ति आदेश कहाँ है आपका? मतलब P2 my lord। P2 पढ़िएगा, पढ़िएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको तो पढ़िएगा। मतलब इसमें टाइप कॉपी है, टाइप कॉपी पीछे लगी। हाँ पढ़िएगा। ग्राम पंचायत नोएडा ग्राम नोएडा में आंगनबाड़ी केंद्र पर श्रीमती सुहाग रानी पति श्री लखु रेकवार की 200 रुपये प्रतिमाह मानदेय की दर से आंगनबाड़ी सहायिका। सहायिका है, प्यून नहीं है ना? ठीक है। श्री क्या लिखा? Shri Kurmi further submits that petitioner was in fact appointed as a peon and not as Anganwadi Sahika. However, this is contrary to annexure P2, which reveals that petitioner's initial appointment was as Anganwadi Sahika. Therefore, petitioner, instead of placing the educational qualification documents on record, is trying to play hide and seek game with the court by saying that on the basis of ossification report, her date of birth should be accepted and the impugned order be quashed. Next para. Respondents are directed to produce on record copy of the details of the advertisement which was issued for appointment of Anganwadi Sahika, and will point out that at the time of appointment of the petitioner, whether any
educational qualification was prescribed or not, and if educational qualification was prescribed, then what was that educational qualification, and will also produce the copy of the concerning mark sheet in support of their contention as was obtained from the petitioner at the time of her initial appointment. Next para. If it is found that there exists a mark sheet or a valid document to show her date of birth as that of 1960, then petitioner will not be permitted to withdraw the petition and will be liable to pay exemplary cost as may be determined by the court. Let records be called for from the concerned project officer, Jabera, District Damo, within 7 days. List this case on 12 March, top of the list. For further hearing. चलिए इधर भागने भी नहीं दूंगा अब इनको मैं. वकील साहब पक्षकार से पूछ लीजिएगा ईमानदारी से, 25 से 50,000 रुपए की कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर. हाँ, अगर डॉक्यूमेंट मिला तो आई विल बी इम्पोजिंग 25 to 50,000 रुपीज ऑफ कॉस्ट ऑन यू. रिप्रेजेंटेशन भी लगातार दिया मतलब. ठीक है, बहुत मेहरबानी करी आपने, बहुत मेहरबानी करी. चलिए हाँ ठीक है, चलिए. मतलब बाय वे ऑफ इंस्टेंट पिटीशन मतलब पिटीशनर इज चैलेंजिंग एन एग्जैक्ट पी1 सर्विस बुक भी बुलाइएगा, ओरिजिनल इसमें लिख लीजिए, ओरिजिनल सर्विस बुक बुलाइए, पूरा रिकॉर्ड. हाँ जी. My lord, petitioner is assailing the order in except P1, my lord, by which, my lord, the petitioner, my lord, claim has been rejected, my lord, on the ground of, my lord, petitioner seeking posting on the basis of preference as given by the petitioner, my lord. क्या है? My lord, petitioner, my lord, filed petition, my lord, to given posting, my lord, in the light of order passed by the Supreme Court in the case Praveen Kurmi, my lord. एक सेकंड. And except P1 is the order, my lord. आपने क्या परिवर्तन चाहा था? My lord, petitioner is seeking, my lord, posting on the basis of he secured the marks, my lord. The person respondent number. आपने किस कैटेगरी में भरा था? OBC lord. नहीं, अरे OBC नहीं, आपने आरक्षक चालक के लिए भरा था, डिस्ट्रिक्ट कैडर में भरा था, कहाँ भरा था? आरक्षक चालक डिस्ट्रिक्ट कैडर में. एडवर्टीजमेंट कहाँ है? My lord, petitioner P2 is the, my lord, choice filling, my lord. नहीं, चॉइस फिलिंग नहीं, एडवर्टीजमेंट बताइए पहले. विज्ञप्ति कहाँ है, उसमें क्या लिखा है? My lord, advertisement is not filed, but the preference, my lord. एक सेकंड रुकिए ना, इसमें ये ऑनलाइन क्या है? ये आपने इसमें SP डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शिवपुर, भोपाल, सागर, ठीक है, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट दे दी आपने. पहला, मतलब पहला प्रेफरेंस में SP डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर मांगा था लॉर्ड से. अच्छा, एक मिनट रुक जाइएगा. मेरिट पोजीशन 145, कांस्टेबल ड्राइवर B, ठीक है. My lord, he secured 67.91 marks, my lord. हाँ ठीक है. आपने सबसे पहले ग्वालियर मांगा था. My lord, ग्वालियर मांगा था. हाँ. My lord, ऐसा कहाँ है कि मेरिट पोजीशन के हिसाब से आपकी चाही गई जगह पे दिया जाएगा? My lord, because, my lord, the private respondent has been, my lord, given, my lord, posting, my lord, who secured the less marks, my lord, from the petitioner, my lord. He is giving the first preference, my lord, as allotted the Gwalior, my lord. I have annexed the order, my lord. Annexer P7. किस कैटेगरी में है ये? Same category, my lord. And she also constable and driver, my lord. I have also filed the choice filling of the private respondent. देखिएगा, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा. Petitioner's contention is that private respondent, despite securing lesser marks than the petitioner, was given posting at as per his first preference, that is at Gwalior, whereas petitioner who had secured more marks than the private respondent was given posting at Bhopal. Full stop. Respondents to file a specific reply that what was the rationale of seeking choice filling and on what basis that choice filling has been entertained by the authorities. That is, whether choice filling was a hollow formality or it has some nexus with the marks secured by the petitioner, by a candidate in the qualifying examination.
or any other factors were taken into consideration, let the specific affidavit of the additional Inspector General of Police within bracket selection PHQ be brought on record, pointing out the aforesaid three issues list on 13 मार्च 2024. तो कोई ऑर्डर हुआ है रिकंसीडर करने के लिए, लगा है जैसा आदेश करें आप? नहीं, क्यों करेंगे? अब हम जानकारी तो ले लें, फिर आप रिजेक्ट कर देते हैं. आप P1 से ऑलरेडी कर चुके हैं. P1 में आपने कहानी ऑलरेडी सुना चुके हैं आप. तो उस कहानी को दोबारा क्यों सुने? आपको भी तो मालूम पड़े कि क्या क्राइटेरिया है. ठीक है ना? Let original file in which criteria was fixed be also brought on record along with the affidavit. मोटी हो गई तो होने दीजिए ना, होने प्रयोजन के लिए मंगा दें. हाँ, तो बुला लीजिए ना. It is follows a family pension, my lord. I am a widow of Lordship District Employee, my lord. You are a widow of? Lordship District Employee, my lord. Lordship, he was died on 28/7/22, Lordship, during the service, Lordship. Lordship, he was posted as post of Lordship Grameen Vistar Udyan Adhikari, my lord, in the department of Lordship Horticulture, my lord. Okay, petitioner's contention is that petitioner is widow of late Moti Singh Vinayak, who was working as a rural agriculture extension officer under the respondent number 2 and 3. Full stop. Petitioner has not been paid family pension despite her entitlement for the same. आपने कोई अभ्यावेदन दिया है क्या? जी सर, सर P3 है सर ये. Petitioner has already moved a representation annexure P3 for grant of family pension, but till this date that has not been considered. Next para. The Collector Umaria in consultation with respondent number 4, District Pension Officer, shall consider and decide petitioner's representation for grant of family pension within 15 days of receipt of certified copy of the order through a speaking order. Full stop. With the aforesaid, this petition is disposed of. Pramendra Singh. Petitioners are working as head constable, acting head constable. Radio, my lord, police radio. और seniority का झगड़ा है. Issue notice to the respondents on payment of PF by the registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Interim release कर. हाँ? Interim leave seniority में कहाँ होता है? Senior बैठे हैं, senior कह देंगे तो मैं कर दूंगा. पूछ लो seniority में interim leave होता है तो कर देंगे. List already बन गई सर. ठीक है, बैठो बस. हमारे पिटिशनर जो है वो हॉस्टल वार्डन है. जी क्या है? मेरा केवल इतनी है कि इसमें और भी रिस्पोंडेंट नंबर 4 का भी रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है वार्डन पद के लिए. मैंने भी मैं ऑलरेडी respondent number 4 have already made a representation to the respondent number 3 हाँ 3, and it is the only prayer made by Shri Paliwal is to consider, to direct the respondent number 3 to consider and decide the representation through a speaking order within some prescribed time limit. 7 दिन 15 दिन. This court has not expressed any opinion on the merits. ये मेरा रिप्रेजेंटेशन आप ही का तो हाँ, क्योंकि रिस्पोंडेंट 4 का भी हाँ ठीक है. दोनों को साथ साथ डिसाइड करें मेरिट पे जो भी है. वही लिखा है. ठीक है. प्रेजेंटेशन डिसाइड हो जाना जी उपाध्याय जी. नहीं, हमारे का भी ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका. हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है. पालीवाल साहब इतनी छोटी सी बात तो मांग रहे हैं, आप उसमें भी अड़चन लगा रहे हैं. मैं तो इसलिए मान रहा हूँ. नहीं इन्होंने 9 साल वहां ही किया है. 3 अभी मेरे 4 साल हुए, 4 साल भी नहीं हुए, उसमें 2 कोविड-19 के निकल गए, तो अब बचे 2 साल. तो कम से कम 2 4 5 साल तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए. बिल्कुल ठीक बात है. चलिए. This court has not expressed any opinion on the matter.
Number 24. P1 में लोड जो 31/8/2022 को मतलब 2 साल के लिए डेपुटेशन में अपॉइंटमेंट हुआ था मतलब कब हुआ था? 31/8/2022 में लोड हाँ, लॉर्डशिप 2 साल के लिए हुआ था कहाँ है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर? लॉर्डशिप नेक्स्ट P1 पेज 10 पे मतलब हाँ, लॉर्डशिप पैरा 3 में लिखा है 2 साल एक मिनट रुक जाइए, पढ़ने लीजिएगा। मान जी, फिर नेक्स्ट P3 इन ऑर्डर मतलब पेज 13 पे मतलब जी 21/2/24 को लॉर्डशिप स्टिग्मेटिक ऑर्डर पास करके लॉर्डशिप मुझे कभी कोई इंक्वायरी नहीं सुनवाई का मौका नहीं मिला। उसमें कंडीशन में दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर में P1 में ही दिया हुआ है, उसकी इंक्वायरी हम थोड़ा ना करेंगे। देखिएगा, पिटिशनर इज एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 21/2/2014 पास्ड बाय द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान डिस्ट्रिक्ट उमरिया repatriating the petitioner from the post of block resource coordinator जनपद शिक्षा केंद्र to his substantive post of a उच्च माध्यमिक शिक्षक. Full stop. Petitioner's contention is that wide order annexure P1 dated 31/8/2022 petitioner was taken on deputation on the post of block resource coordinator and the term of such deputation was 2 years, but prior to completion of 2 years period, his deputation has been brought to an end. Therefore, this petition. Next para. Shri Ankit Agarwal submits that there is a clause in the deputation order itself as contained in annexure P3, which provides that in case of there being any unsatisfactory work, then his period of deputation can be terminated without any prior intimation. Full stop. When this aspect, next para, when this aspect is taken into consideration, then as per the stipulation contained in the appointment order, impugned order when tested cannot be faulted with petition fails and is dismissed. Number 25. We please your lordship. Lordship, in this matter, petitioner is aggrieved from the recovery amount, my lord. Petitioner engaged as a skilled helper, class 3 employee, my lord. क्या हो गया? Recovery amount, excess recovery amount के लिए, my lord, वो aggrieved हो गया, my lord. My lord, kindly see annexure P3 page 22, my lord. Petitioner engaged as a skilled helper, contingency employee, my lord. जी जी. Class 3 employee, my lord. हाँ. फिर And my lord, after petitioner attaining the age of superannuation on dated. The petitioner's contention is that petitioner attained age of superannuation as a skilled helper within bracket contingency. After his superannuation, a recovery of to the tune of rupees 7,60,584 has been pointed out by the divisional pension officer Riva. Full stop. It is submitted that in the light of the law laid down by Supreme Court in Rafiq Masih Whitewasher, पूरा citation लिखिएगा. Such recovery is not permissible. Next para. Taking these facts into consideration, issue notice. Notice is waived by Shri Ankit Agarwal. In the meanwhile, as an interim measure, it is directed that no recovery shall be affected from the dues of the petitioner. Recovery already हो चुकी है. अच्छा, फिर interim measure हटा दीजिएगा. ठीक है. और मिनट रिकवरी अमाउंट भी मिनट 2,66,000 है, 7 नहीं है. अच्छा, 2,66,000. इसमें कैसे लिख दिया? 7 लाख. टोटल अमाउंट है, मतलब इसमें कहाँ Annexure P4. मतलब काइंडली सी P4 है. अच्छा, सॉरी, वो रिकवरी अमाउंट बदल देना. 266,652 on account of excess payment of salary. उसमें आप एक लाइन और लिखना. Respondents will be required to show that how petitioner was responsible for making his own pay fixation, and if he was not responsible for such erroneous pay fixation, then how a recovery can be made from a class 3 employee.
in violation of the law laid down by Supreme Court. Class 3 retired employee. चलिए. Let reply be filed within 4 weeks. List on 5 अप्रैल 2024. Acknowledgement. My lord, my petition is challenging Pune order in Exhibit P7, my lord, page number 25. In this case, my lord, petitioner is appointment in the order passed by the respondent number 3 in Exhibit P1. एक सेकंड. इसमें लिखा जन शिक्षक के पद हेतु आपकी पात्रता नहीं बनती. बताइए क्या पात्रता है और कैसे आप फुलफिल करते हैं. यस मैडम, इन Exhibit P1 जो है. P1. यस मैडम. इसमें पात्रता के लिए ये दिया था कि उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक. कहाँ दिया है प्लीज पढ़िए. पेज नंबर 12. पेज नंबर 12. हाँ. से दूसरा पद की अर्हता. यस मैडम. उच्च श्रेणी शिक्षक अब्लिक माध्यमिक शिक्षक, आयु है 1 साल 52 से अधिक न हो. 52 से अधिक नहीं हो. विभागीय जांच शासन के प्रचलित नियम अनुसार. यस मैम. प्रतिनिधित्व शासन के प्रतिनिधि. ठीक है. माइलॉर्ड एनएक्या P3 देख लें. P3. यस मैम. हाँ. ये हमारे बीआरसीसी ने मेरी अपॉइंटमेंट किया था 2022 में. यस मैडम. 24/11/2000. इसके बाद हमने ज्वाइनिंग कर लिया एनएक्या P4 से. हाँ. अब ज्वाइनिंग करने के बाद मैडम ये अभी ये एनएक्या P7 जो आदेश आ रहा है, या अभी ये कह रहे हैं कि आपकी पात्रता नहीं. तो आपको दोबारा क्यों उसको वो करना था. मतलब आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं जन शिक्षक के रूप में. जी जी. आप जन नायक हैं. फिर दोबारा जन नायक क्यों बनना चाहते हैं. मैं ये नहीं, इसमें ये शासन के अनुसार जो प्रतिनिधि की नीति है. इसके पहले आप रह चुके जन शिक्षक. नहीं सर, ये पहले फर्स्ट टर्म था या फर्स्ट टाइम है. Then why you need to get this application. अभी तो आपका टेन्योर बचा हुआ है नवंबर 24 तक. फिर ये तो इन्होंने ये लिख के ऑर्डर कर दिया जन शिक्षक ने. यही तो मैं बताना चाहूँ. क्या इनका ये कहना है कि अनुसार आप सभी की पात्रता जन शिक्षक पद है तो नहीं बनती. नहीं. इन्होंने क्या लिखा है पढ़िएगा. यस मैम. आपके द्वारा जन शिक्षक पद पर कार्य करने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र अग्रेषित न किए जाने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के क्रमांक इतना 7224 एवं कार्यालय जन शिक्षक केंद्र इतना ममोरी कला विकास के पत्र इतने अनुसार आप सभी की पात्रता जन शिक्षक पद हेतु नहीं बनती है. उक्त स्थिति में जन शिक्षण केंद्र इतना बमोरी कला आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने में असमर्थ है. ये तो अग्रेषण है. आपने दोबारा कोई एप्लीकेशन लगाई है. पर मैंने हमारा भी टर्म ही खत्म नहीं हो. प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का है. हमारे 2 साल है. बुला के लाइएगा, लिखिएगा. पिटिशनर इज असेलिंग ऑर्डर एनेक्चर P7 डेटेड. इसकी डेट क्या है P7 की? 15/2/24. पास्ड बाय जन शिक्षा केंद्र इंचार्ज जन शिक्षा केंद्र बमोरी कला डेवलपमेंट ब्लॉक पलेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ on the ground that petitioners are already working as jan shikshak in terms of the order of appointment dated 24/11/2022. 24/11/2022. Then there was no occasion for the respondent to say that their applications cannot be forwarded. Full stop. Let specific affidavit of the district project coordinator, district education center Tikamgarh be filed in this behalf, that under which provision of law said communication has been made by the respondent number 8. Let affidavit be filed within 10 days. List this case on 13 March 2013 मत करिए, on 19 March 2024. नोटिस करके नोटिस इज वेव्ड बाय श्री अंकित अग्रवाल कर दीजिएगा. मीनवाइल तब तक हमें मीनवाइल क्या करेंगे? आपको हटाया थोड़ा है अभी. अभी हटाया. फिर वो एडवर्स पेमेंट वगैरह. चलिए ओपला जी. ये नंबर 27
My lord, this matter pertains to cancellation of appointment of petitioner on the post of on the post of my lord Samveda Sala Shikshak 3. जी कब किया इन्होंने? That is my lord annexure P1 at page 9 my lord. This is 27/3/2012. जी स्टे है क्या? Stay है sir. हाँ बताइए. My lord, one admit, my lord, the petitioner cleared the my lord Patrata Pariksha. जी. Page 21 is the my lord Excellent. mark sheet. एक सेकंड. डीएड नहीं है आप. डीएड नहीं है, अनुभव नहीं है. ठीक है. अब रिक्वायरमेंट क्या थी? आप यू वर अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3. संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? इतना बता दीजिए. जी सर. The requirement is my lord to clear the my lord Patrata Pariksha and as per the my lord schedule 2. These are the qualifications my lord. Schedule 2. Schedule 2 वर्ग 3 उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा या कहाँ दिए? शेड्यूल 2 में कंडीशन क्वालिफिकेशन. ये सर पहले इसका सर रूल 5 का 4 देख लें सर. 5 का 4. जी सर. एक सेकंड. नियम 4 5 का 4. संविदा शाला शिक्षक पात्रता में शैक्षिक अर्हता अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी. So I have cleared this examination my lord. हाँ नहीं ठीक है. पात्रता इसके बाद सर देखें इसके बाद रूल 9 में शैक्षणिक योग्यता क्या दी है? सर रूल 9 देखें. हाँ रूल 9. रूल 9 में ये है कि दीज आर दी my lord एडिशनल क्वालिफिकेशन. दीज आर नॉट my lord पढ़िएगा ना. जी सर. कहाँ दिया है? These are my lord additional if someone my lord possessing those नहीं है वकील साहब. थोड़ा सा प्लीज. जी सर. जल्दी मत करिए. जी जी. इसी 9 का ग पढ़िएगा. जी सर. 9 के 5 का ग. जी सर. प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक 1 के अभ्यर्थियों को बीएड डीएड संविदा शाला शिक्षक ग्रेड श्रेणी 2 के अभ्यर्थियों को बीएड इतना इतना और बीटीसी स्वयं संविदा शाला श्रेणी के अभ्यर्थियों को डीएड बीटीसी डीए के आधार पर 20 अंक दिए जाएंगे. सो दीज आर माय लॉर्ड एडिशनल. ठीक है. क्वालिफिकेशन वो बोल रहे हैं ना रूल 5-4 में कि अनुसूची 2 में क्या क्वालिफिकेशन दिए? यही तो आपसे पूछ रहे हैं भाई. जी सर. अनुसूची 2 है सर. ये उसका मैंने पेज 13 में है 18 वर्ष उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा या कहाँ पढ़ रहे? पेज 13 में. वो तो उम्र है 18 और 35 वर्ष. जी जी. उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा या समका शैक्षणिक अर्हता. जी सर. This is the essential qualification and those are my lord the additional qualification. Some candidate having those qualification he entitled for my lord. अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज.
Yes, you file reply. Reply में क्या कहा आपने? Reply तो already है record में. Reply में क्या कहा आपने? My lord, may I kindly see annexure P1. R1, P1. P1. I'm reading the third paragraph. Lord. Third paragraph. जी. ये उक्त भर्ती में बड़ी मात्रा में अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर महोदय पन्ना द्वारा उक्त भर्ती प्रक्रिया की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी गुन्नौर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई। ये तो ठीक है, मैं तो क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ। Yes, आपने 2 ग्राउंड पे किया, इनके पास D.Ed नहीं है और अनुभव नहीं है। Yes. हाँ. Now where is the requirement of possessing D.Ed diploma for being appointed as संविदा शाला शिक्षक grade 3? My lord, the appointment made by the appointments are illegal, my lord. That is why the committee was constituted and. अरे भाई, ये तो बात की बात आ गई। Yes. आपने उसको अपॉइंटमेंट को इलीगल क्यों माना? आपने ये कहा इसी आदेश में P1 में कि इनके पास D.Ed नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए इलीगल है इनका अपॉइंटमेंट। यही कहा ना आपने? तो आपको ये तो बताना पड़ेगा भर्ती नियमों से कि भर्ती नियम में D.Ed की अनिवार्यता थी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 को नियुक्त करने के लिए। वो कहाँ से बताएंगे आप? If I say that Mr. Saurabh Soni cannot be appointed as a government advocate because he has not put in 7 years of experience post obtaining a certificate of registration from the council, then I am required to prove 2 things: that आपके पास LLB की डिग्री नहीं है, आपका बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसलिए कि आपको ये बताना पड़ेगा D.Ed की रिक्वायरमेंट कहाँ से आई थी। For that, Lord, I'll pray for additional reply. This has not been discussed in this reply. देखिएगा, श्री D.K. Tripathi for the petitioner. Shri Saurabh Soni, after reading annexure P1 in which it is mentioned that petitioner was disqualified to be appointed as Samvida Shala Shikshak Work 3 on account of not possessing a D.Ed certificate and experience, calls praise for time to bring on record the relevant rules that at the time of petitioner's appointment, it was mandated in the year 2006, the qualification of D.Ed was mandatory for such appointment. Let relevant rules be brought on record on or before next date, list in the week commencing 8 अप्रैल 2024। वापस कर दीजिएगा। रिटर्न आ गया, इसको देख लेते हैं, अगले हफ्ते करना। रिटर्न कब? आज ही आया है क्या? रिटर्न 23 तारीख को आया। 23 फरवरी को जी। लिखिएगा, श्री लाल ज्ञानेंद्र सिंह बघेल सबमिट्स दैट ही हैज रिसीव्ड रिटर्न ऑन। इसमें तो 2013 का रिटर्न लगा हुआ है। नहीं, अभी पेश किया है इन्होंने। देख लो, एक मिनट। पिटीशन 2000 हैज रिसीव्ड रिटर्न इन फरवरी 2024 ओनली। फुल स्टॉप। ही प्रेज फॉर टाइम टू गो थ्रू द रिटर्न। क्या कहा है रिटर्न में? रिटर्न में एक जजमेंट का हवाला दिया, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शंस नहीं दिए और उसके आधार पर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। टर्मिनेशन है 40 साल की नौकरी के बाद में बिना नोटिस के। Termination on the basis of registration of on the basis of conviction law. ठीक है। लेट अपील में क्या हुआ ये भी देख लीजिएगा। इसकी क्रिमिनल अपील में जी, क्रिमिनल अपील तो उसमें कॉम्प्रोमाइज के आधार पर एक्विटल हो गया। अच्छा, उसका क्या? प्रेज फॉर टाइम टू फाइल रिजॉइंडर एंड आर्ग्यू दिस केस ऑन हिज रिक्वेस्ट लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। Court of lab assistant may not be abolished. It's converted to science teacher. The grievance is not that this is second round of litigation. We found not the court had directed them to give benefit of that pay scale from 1 till 1985. They gave us that benefit from 1 till 1987. Malord had asked us to file appointment orders. We have filed. देखिएगा, issue notice to the respondents. Notice is waived by Shri Saurabh Soni, learned panel lawyer for the
state, let reply to the petition be filed within 4 weeks list thereafter. My lords, this case is listed today for admission, my lords. My lords, this is the petition wherein petitioners are aggrieved by the inaction of the respondent authorities in not issuing appointment orders for the post of Gram Rozgar Sahayak, my lords. कब सिलेक्शन हुआ आपका? My lords, petitioner was declared, merit list was declared by the respondent authority on 21/2/2023. We have marked the same as... Contention is petitioners had participated in the selection process leading to appointment of Gram Rozgar Sahayak. Selection list was issued on 21/2/2023, my lords. 21/2/2023, but till date no steps have been taken by the authorities to extend benefit of appointment in favor of the petitioners. Petitioners have already moved a representation, Annexure P5, addressed to the Commissioner, Madhya Pradesh State Employment Guarantee Council, Bhopal. 15 दिन, 30 दिन. This court has not expressed any opinion on the merits. Number 31. No, this is the case whereby on the last date of hearing, we were directed to implement some instructions in regard to the notices which have been issued to the whether any notice has been issued to the petitioner or not. Yes, yes. Today itself we have filed this document. This, in fact, the notices has already been only been issued to the salesman, and not to the. Yes. Then this order has to go. Yes, this is, and liberty may be granted. देखिए, petitioner's contention is that this petition is challenging the action of the respondent number 3, subdivisional officer. Lordship already decided this issue that on section 16(7), under clause 16(7). Annexure P4 is also on the formula. Same order कर देना, इसमें इनका fair submission डाल देना. Shri Sharma fairly admits that notice was not issued to the society but only to the salesman. Liberty है ना? Number 32. In this public service commission has time to reflect to go through. देखिएगा, Shri Ajat Krishna Bass submits that Public Service Commission has filed its reply today only. Prays for time to go through the same. कितना समय चाहिए आपको? Next week. Prays for a week's time to do the needful list after a week. बताइए. My lord, this is a service matter related to the Commissioner Medical Education Madhya Pradesh, which says that Dr. Vipin Kumar, who was already at the post of assistant professor in Vidisha, was deputed to the Government College of Medical Satna. And when these Medical College Satna they taken out the advertisement for the recruitments of the fresh assistant professor, the same person got selected again At Vidisha. at the Satna. नहीं. He was deputed from Vidisha to Satna. Satna for Respondent number 4 was deputed from Vidisha to Satna. who is respondent number 4? Dr. Vipin Kumar Mishra. Yes, sir. Right. Now he was deputed. He has been selected at Satna. So Again selected at Satna. So when a person is already assistant professor, how can he again be selected? the difference. Try to understand. कितना टाइम हुआ आपको वकालत करते हुए? आपको वकालत करते हुए कितना टाइम हुआ मैडम? So 1 month. 1 month. Please try to understand. You are
Simran Mamtani. Yes. Please try to understand. There was a advertisement, there was a vacancy. These are all autonomous colleges. He was working at Vidisha. When inspection came, he was deputed to Satna. Then when the advertisement was issued, he applied for it. He has been selected. He has been placed at serial number 1 and your name is in the waiting list. Yes, sir. If he fails to join, then you will get a chance. And if he joins, there is nothing wrong in it. इतना सा मैटर है ये, ठीक है? आपका पहला केस है इसलिए आपको समझा रहे हैं, नहीं तो हम इतना टाइम नहीं देते समझाने के लिए. ठीक, चलिए लिखिएगा. Miss Simran Mamtani for the petitioner. Petitioner's grievance is that private respondent number 4, Dr. Vipin Kumar Mishra, was earlier working as assistant professor in the Department of Orthopedics at Vidisha Medical College. Later on, he was deputed to Satna Medical College. Full stop. An advertisement was issued for appointment of assistant professors in different fields, and now the person who was deputed to work at Satna, that is respondent number 4, has been selected at serial number 1 for the post of assistant professor, and petitioner's name finds in the waiting list at serial number 1. Next para. Petitioner's grievance is that this could not have been done and injustice has been done to the petitioner. Next para. Shri VIVEK Sharma, learned Deputy Advocate General for the state, in his turn submits that a fresh recruitment was initiated by the Satna Medical College, and in terms of that recruitment process, petitioner was found to be less meritorious and has been thus placed at serial number 1. Full stop. There was no embargo on working candidates or candidates on deputation or those working somewhere else to apply to the post of assistant professor, and therefore there is no illegality in the selection of respondent number 4, Dr. Vipin Kumar Mishra, as assistant professor orthopedics for Satna, for Medical College at Satna. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, there is no material brought on record to show that respondent number 4 was precluded to apply for the post of assistant professor orthopedics by operation of any law or in terms of any stipulation contained in the advertisement which was issued to fill such posts. Full stop. Therefore, in absence of there being any legal impediment in applying for the post and competing on the merits, and it is not the case of the petitioner that the private respondent is less meritorious than the petitioner, no indulgence is called for. Petition fails and is dismissed. The petitioner was placed as in the waiting list. लिखा दिया आपने, सुना नहीं? आप कहीं खो गए थे? सर वेटिंग लिस्ट. वेटिंग ही लिखा है. वेटिंग ही लिखा है. आप कहीं खो गए थे? नहीं सर. तो शासन का कोई जरूरी काम याद आ गया. चलिए नेक्स्ट केस. reply file case में आज. So reply to lots of still getting. Amendra Singh submits that he has received reply today itself. He prays for and is granted 10 days time to go through the reply and argue this case. List immediately after 10 days. IR में continue. IR to continue. List date दे fix. List on 20 March 2024. In this case, the reply is already filed. Copy is not supplied to me. क्या हो गया? The reply has already been filed by the state government. Copy is not supplied to me. कॉपी नहीं दी आपने? सप्लाई कर देता हूँ मैं आज इनको. नहीं देख लेते हैं ना. तो सप्लाई 2022 का रिप्लाई है. मैंने उसको ऑनलाइन चेक किया तो उसमें ये इसमें तो ये साइन आपकी नहीं है क्या? देखिएगा ऑनलाइन. रिसीव्ड कॉपी विकास मिश्रा करके साइन लगे हुए हैं. नहीं सर, मेरे साइन. आपके साइन नहीं है. लिखिएगा. श्री विकास मिश्रा सबमिट्स दैट द सिग्नेचर्स व्हिच हैव बीन पुट ऑन. अब तो इंक्वायरी करवाई देते हैं. कहाँ है आपके डिप्टी एडवोकेट जनरल साहब? बुलाइएगा. क्या तरीका है आपके यहाँ से? फिर आपके कर्मचारी हाथ पांव जोड़ते हुए आ जाते हैं. ये फर्जी साइन कब तक बनाते रहेंगे आपके चपरासी?
इनके सिग्नेचर्स का सैंपल लीजिए और पीएचक्यू से जांच कराइए और जिसने ये फर्जी साइन किया उसको टर्मिनेट करिए. व्हाट इज दिस? 2 साल तक रिप्लाई की कॉपी नहीं देते. आपके चपरासी को इतनी तकलीफ होती है कि इंस्टेड ऑफ सर्विंग कॉपी ऑन द कंसर्न काउंसिल दे रिसोर्ट टू दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स. तो 22 का रिप्लाई है ना, 2022 का. हाँ 22 का. तो क्या हुआ, सिग्नेचर्स तो मैच हो जाएंगे ना, किसकी हैंडराइटिंग है. और आपके पास ये भी मालूम होगा कि किस चपरासी ने ले जाके कराया था. देते होंगे ना आप चपरासियों को जिसकी ड्यूटी होगी जी, जहाँ एक्शन लीजिए. देखिएगा, श्री विकास कुमार मिश्रा डिनाइज हिज सिग्नेचर पुटिंग हिज सिग्नेचर्स which have been mentioned on the cover page of the reply with the note within inverted commas received copy विकास मिश्रा एडवोकेट सिग्नेचर उसके नीचे 12/9/2022. It's a serious matter that for about 2 years reply for about 1.5 years reply is not supplied to the council. मैं एक निवेदन कर दूं सर. इसमें चपरासी को टर्मिनेट करिए. ये फर्जीवाड़ा कानून के प्रांगण में होना सबसे ज्यादा दुख की बात है. आप कानून के रक्षक हैं. Whosoever he is, action should be taken against him. क्या लिखा? Council and adding insult to the injury, forged signatures have been put so to file a reply before the High Court. Full stop. This court cannot become a silent spectator to the misdeeds taking place within the premises of the High Court. Full stop. Looking to the gravity of the matter and a categorical statement made by Shri Vikas Mishra that the signatures which are available on the cover page of the reply filed wide IA 15910/2022 are not his signatures, Secretary to the Office of the Advocate General is directed to carry out an investigation. He will obtain sample signatures of Shri Vikas Mishra which he undertakes to give it to him during the course of the inquiry, and also obtain signatures of the various persons deputed in the Office of the Advocate General for serving the reply, and after matching the handwriting and the signatures shall take action against the delinquent for committing forgery by putting a forged signatures of Shri Vikas Mishra. Let these steps be taken within a period of 1.5 months, that is 45 days from today, as the order is dictated in presence of learned Deputy Advocate General Shri Vivek Sharma, who will communicate it to the concerned Secretary of the Advocate General Office during the course of the day. Full stop. If the need being, signatures and the handwriting be referred to the QID, that is Quotient Document वो है investigation, QID Police Headquarters, Bhopal, for verification. And if the delinquent accepts his guilt, then appropriate action be taken without referring the matter to QID. Let action taken report be produced for perusal of this court through the Registrar General. Lord, I want Next to pair. also make a request. Lord. हाँ. That action हम इतने दयालु नहीं है. सॉरी, या तो आप कह दीजिए या आपके सिग्नेचर हम सब खत्म कर देते. आपने ही बोला, यू इनिशिएटेड इट, बस फिनिश इट. लेट Shri Mishra has been supplied copy of the reply by Shri Khatka. दे दी ना आपने रिप्लाई की कॉपी? अभी नहीं, अभी दीजिए ना, अभी दीजिए सामने मेरे. सिंगल कॉपी का फोटो कॉपी कराना पड़ेगा. अभी आप डाउनलोड कर लीजिएगा. सिंगल कॉपी नहीं, दे दीजिए अभी आप कॉपी. आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा. Shri Khatka has supplied copy of the said reply to Shri Vikas Mishra, who may file rejoinder within 4 weeks list thereafter.
Kindly appreciate order dated 22/1/2024. 22/1/24 Yes, sir. क्या लिखा है उसमें? जी हो गई कंप्लायंस इसकी? We filed it and annexure A6, A7 and A8 are the document whereby they have the. कब फाइल किया आपने ये कंप्लायंस? सर हमने 25/70/24 जी A7 A6, A7 and A8. A8 तो लगाया ही नहीं आपने अवस्थी साहब। A6, A7. हाँ, Sorry, sir. ऐसा मत करिए। Sorry. A6. Now see, this is the document dated 5/8/2019 when the Department of Forest has. सवाल क्या पूछा था आपसे? तो सर ये आपसे सवाल क्या पूछा था? फिर वापस आइएगा। सवाल पूछा था time to bring on record the date on which 110th meeting of board of directors. वो सर रिकॉर्ड पर हमने वो डेट क्या आई है बताइए? वो सर 13/4/2016। 13/4/2016। सर आप पेज 3 सर देखो। इसका P6 का A6 का नहीं सर पेज 3 देखिए। पेज 3 ऑफ व्हाट? दिस कंप्लायंस रिपोर्ट। हाँ पेज 3 ऑफ कंप्लायंस। सर सिलसिलेवार ये हमने ही सबसे पहले इसको प्रोसीड किया था मैटर। फिर ये रजिस्ट्रार के यहाँ गया। पेज 3 पढ़िएगा। जी सर। That in the 110th meeting of the Board of Director was held on 13/4/2016. There is resolution number 110/05 in relation to enhancement of wages from ₹6,000 to ₹10,000 per month for managers of primary minor for produced cooperative societies was passed, and it was further resolved that after approval by the Department of Forest, Government of MP, the proposal be sent to the Commissioner, Cooperative cum Registrar Cooperative Societies, the copy of proceedings 13/4, and thereafter Lordship on आप इसको देखेंगे सर 22/6 को ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी के पास गया है। 17/8 को एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन हुई है। कहाँ लिखा है ये सर रोमन 3 सर देखें 22/6 रोमन 3 proposal was sent to the Department of Forest. The Department of Forest इतना has granted administrative permission for enhancement 17/8/16 को। जी फिर सर ये मामला that then it goes to the registrar. रजिस्ट्रार क्या कब गया? सर ये 27/8/2016। तो उन्होंने अप्रूवल कब दे दिया? सर ये उन्होंने 27/8 ये सर annexure A4 हमने फाइल किया। That may be seen सर। तारीख क्या है इसकी? हाँ सर मैं बता रहा हूँ। That is annexure A5 page 50। क्या तारीख क्या है? 1/10/2000 उन्होंने तारीख दी है 29/9/2016। 29/9/2016 और 1/10/2016 से उन्होंने बोला है कि ये अमेंडमेंट सर्विस रूल्स में एप्लीकेबल 1/10/16 से। जी सर। ठीक है इनको कब से दे दिया आपने? No lordship, thereafter the matter was pending with the government and government has fixed the date by annexure A6 sir, page 16। चलिए देखते हैं। जी सर। It is in the A5 पढ़ें पहले। सर A5 एक मिनट एक करके चलते ना। जी सर बिल्कुल। इसमें that is amendment कमिश्नर ने दे दिया इसको और 29/9/2016 को और 1/10/2016 से प्रभावशील होंगे। ठीक है अब अगला पेज चलिए। A6 सरकार ने क्या कहा? तो मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के संचालक मंडल की एक ये डेट चेंज करने का अधिकार कहाँ है? और ये डेट भी गलत लिख रहे हैं। 113वीं बैठक सर उसके अरे भाई सर ने 113वीं बैठक का भी नहीं एक सेकंड 29/9/16 को रजिस्ट्रार कॉन्फ्रेंस दे चुका है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में मैटर क्यों जाएगा? कहाँ प्रावधान है स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस का? नहीं एक सेकंड आई कैन ओनली से दैट नॉट दिस नहीं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लघु उपज संघ के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय हैं
उनको रजिस्ट्रार को रेटिफाई करना जरूरी है, ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दिया हुआ है। वो बात तो समझ में आती है। उसके बाद शासन की अनुमति का कहाँ से प्रावधान है, इतना बताइए। क्योंकि सर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल गवर्नमेंट ने, हमने रेजोल्यूशन में आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल गवर्नमेंट से मिला, बिकॉज इट विल अप्लाई टू। नहीं तो वंस कमिश्नर when commissioner cooperative has given approval, can that date be changed by the government? That's a legal question. The moment the amendment is, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं लीगल क्वेश्चन, जैसे कल को, because I'll decide it. Because sir, Show me the provision. Show me the provision. I'm not the government, sir. I'm only for number 2. Who is for the government? गवर्नमेंट पार्टी है नहीं है इसमें? कौन है गवर्नमेंट के? कोई आ नहीं रहा इसमें। सरकार क्यों नहीं होगी सर? है तो एडवोकेट जनरल लिखा तो है इसमें। सर जी, we have no। जी बताइएगा, खड़े होने से काम नहीं चलेगा। फाइल कहाँ है आपकी? जी सप्लाई नहीं हुई फाइल। क्यों नहीं सप्लाई हुई फाइल? मिसप्लेस है जी, मिसप्लेस है। अजीब अजीब बहाने बनाते हैं आप। देखिएगा, पिटिशनर्स रिस्पोंडेंट काउंसिल श्री दीपक अवस्थी सबमिट्स दैट a resolution was passed in the 110th meeting of the Board of Directors of Madhya Pradesh राज्य लघु वनोपज ब्रैकेट में व्यापार एवं विकास ब्रैकेट क्लोज सहकारी संघ टू enhance the remuneration. Enhance the remuneration of managers of प्राथमिक वनोपज समिति from rupees 6,000 to 10,000 by amending the सेवा नियम क्रमांक 8 full stop. This was approved by the Commissioner Cooperative Societies Madhya Pradesh in terms of the provisions contained in section 55 within bracket 1 of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act 1960 full stop. This amendment, which was approved by the Registrar Cooperative Societies, was made effective from 1/10/2016. However, state government by annexure A6 order dated 5 August 2019 Yes, sir. made it effective from 5/8/2019. 5/8/2019 full stop. The moot question is that once a Laghu Vanapach Sehkari Sangh, which is registered under the Cooperative Societies Act and bylaws of which require ratification of their resolutions by the Registrar Cooperative Societies, had obtained such ratification, and Registrar Cooperative Societies had given a date for operation of such amendment, then what was the authority of the state government to change that date? Full stop. This is the crux of the matter. Shri Khatka, appearing for the state government, is not having the relevant file. Full stop. He submits that AG office has not supplied him file as it is misplaced. Full stop. This is a serious matter. This is how the state deals with the matters of the employees. Full stop. That reflects the commitment of the state towards its employees. Next para. Let affidavit of the Principal Secretary of the State Government of MP Forest Department be filed in this behalf, answering the aforesaid query that what is the legal sanctity and authority and under which provision of law state government can sit over the recommendations of the Registrar Cooperative Societies and change the date of application of a proposal as approved by the registrar. Let affidavit be filed within 20 days. List this case on 3rd April, top of the list. Malot, actually date has been changed by the Malot Prabandh Sanchalak of Laghu Vanopaj Sangh. If Malot, मैं appreciate Malot annexure P7, वो तो स्टेट के पास तो जाना नहीं था और उन्हें ठीक है जो भी उन्हें कोई डेट नहीं दी, बट P7 issued by the respondent number 2. P7 पढ़िएगा जी सर. सेकंड पैरा, वन विभाग मध्य प्रदेश शासन के उपरोक्त पद दिनांक 5/8 P7 पढ़ रहे हैं आप कि A7 पढ़ रहे हैं? A7 आई एम सॉरी Malot, A7 एफिडेविट फाइल बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2. P7 देखते हैं P7 में क्या लिखा है.
ये सब consequential नहीं नहीं, आप कह रहे हैं आप 5/8/19 से प्रभावशील मालूम होंगे। पड़ जाएगा, पढ़ लीजिए ना। ठीक है ना, वो कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर है। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट। Yes, I never try to. हाँ ठीक है, ठीक, अरे भाई आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस थिंग। And why he is अरे misleading the ठीक, अरे भाई No, no, उनको mislead because करने से कुछ नहीं होगा। effective date given in the. अवस्थी जी, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? हमने तो ये नहीं कहा कि आपने मिसलीड किया। मैं तो केवल record. I'm on record. चलिए, I'm pointing out on the basis of record. चलिए चलिए, गलत मत पढ़िए रिकॉर्ड को। Sir. Number 37. Lord, it's been 6 years, no reply has been filed till date. अच्छा, वेरी गुड। नोटिस का भी इशू Notices were issued on 4/5/2018. लिखिएगा, श्री सुघोष गोमोरे लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री आदित्य वीर सिंह फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 3 and 4, श्री टी.के. खटका फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2, none for respondent number 1. No reply is filed by any of the respondents till date, though more than 6 years time has left. Though about 6 years time has lapsed. More than 6 years time has lapsed. Therefore, subject to payment of cost of rupees 10,000, state and the council for respondent number 3 and 4 are granted 10 days time to file reply, failing which let individual cost be deposited in the High Court Legal Services Committee. Full stop. Last million से reply हाँ, written note, they were ठीक है, getting ठीक, still कोई appearing minute. कोई बात नहीं, None, it was posted after 8 weeks for none minute. कोई बात Last millions. ठीक है, 10,000 रुपये कॉस्ट पर, Last millions. हाँ, Reply is ready minute. 10,000 कॉस्ट पे लास्ट इंटेलिजेंस कर दीजिएगा, 10 days टाइम टू फाइल रिप्लाई। Most obliged, Your Lordship. Well, it's a matter of regularization of the petitioner and his grievances. Those who were junior to him came to me in some way in 1991, in 2009. Now, in the return, what they say, that this order has been modified, which is, of course, under challenge. Let's have a perusal of the return. In the IA, which is, for consideration, is 19022, filed on 19th of December 2023. Okay. In para, responding the para 1 and 2 have gone on to say, but the order is not on record. What? Because again, I am placed below the juniors. Where They is are this from- order? Where is this order? That is not filed by them. Therefore, this application comes in. My IA. नहीं, रिटर्न में क्या, एक मिनट, रिटर्न में क्या कहा है इन्होंने? ये रिटर्न में पैरा देख ले, एक पैरा 10 में आ जाए हम। Para 1 and 10 2 of का the- जो रिटर्न है, हाँ, उसका पैरा para 10 पढ़ ले हम, with my lord's पढ़िएगा, permission. Please. That it is relevant to point. एक second, madam, please. Para 10 is Page 13, should be page 13. Page 13. 1-3, yes. Para 10. Huh. That it is relevant to point out herein that on a basis of an information given to deponent by the Office of the Engineer and Chief Public Works Department, Bhopal, MP, he has come to know that the earlier order of regularization of service of respondent number 3 and 4 have been modified, and the respective services have been made regularized with effect from 26/9/2009, respondent number 3, 14/1/2009. Whereas I am in October 2000. But where's the order? When was this order passed? Because return comes somewhere in December The 23. contention is that though respondents have made certain averments in para 10, but they have not filed any supporting document to support their contention that the date of regularization of the services of the respondent number 3 and 4 have been modified to 26/9/2009 and 14/1/2009 respectively. Full stop. Petitioner's contention is that in any case, even this modified date will not help because petitioner's appointment is prior to the respondent number 3 and 4, and he has been regularized with effect from October 2009. Very right. And therefore, the reply is cryptic. Full stop. Let affidavit of the engineering chief of the Public Works Department be filed in this behalf that
why they have not chosen to enclose the copies of the orders of correction of the date of seniority, date of appointment, oblique seniority of the private respondent number 3 and 4 along with their reply, and why they were suppressing the same while filing the reply. They will also file file affidavit to the specific plea taken by the counsel for the petitioner that when petitioner is senior, then how juniors could have been given benefit of regularization with effect from January and September 2009 in preference to the petitioner who has been regularized from October 2009. Let a specific affidavit be brought on record within 20 days, list in the week commencing 8 April 2024. Obliged, my lords. Number 39. Lord, this is the case of appointment of Kotwar, my lord. Ji? Appointment of Kotwar. Ji. Void annexer P2 and P3. The order passed by SDO in my favor. P2 and P3. P3, my lord. Annexer P1, page number 10. This is the appeal decided by SDO in my favor. SDO decided the appeal that the appointment of Gawal Ram as Kotwar has been nullified by the SDO, saying that there is no provision that the person who is literate should be given preference, and there is no criminality of this petitioner. That's why Tahsildar has wrongly held that Gawal Ram, respondent number 5, is entitled. MPLRC में कोटवार के रूल्स हैं, पढ़िएगा रूल्स कहाँ पर है? रूल्स है ना कोटवार के नियमित अपॉइंटमेंट के लिए. जी सर. पढ़िएगा कहाँ पर दिया हुआ है वो प्रावधान. सेक्शन 230 है अपॉइंटमेंट का. हाँ हाँ पढ़िएगा, उसी के नीचे नियम दिए हुए हैं. ये क्या क्वालिफिकेशन है? वैसे कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है सर. कोटवार पढ़ते ना थोड़ा सा प्लीज. जी. For each village or group of villages, there shall be appointed in accordance with rules made under section 258 one or more kotwars for the performance of such duties as may be prescribed. 250 में 258 देखें. जी सर 258 में भी क्लियर नहीं है. वन उसको देख लेते हैं. जी सर, केवल ग्राम सभा का है. पढ़ लेते हैं. जनरल रूल मेकिंग पावर, उसके बाद इसके लिए रूल्स भी बने हैं. वो रूल्स ले आइए, फिर उसके बाद में जनरल रूल मेकिंग पावर. इतना देयर आर रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार. स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं लेकर आएंगे, लिखिएगा. देयर आर रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार. लास्ट टाइम सर आपने रिकॉर्ड भी कॉल किया था सर. रिकॉर्ड आ गया इसमें. Record was called. हैं? Full stop. Neither rules have been. रिकॉर्ड है, दिखाइएगा. दिया है ना, तो कवर कीजिए.
आपकी तो क्रिमिनल पृष्ठभूमि भी है सर दोनों के हैं सर 107-16 है दोनों के खिलाफ 107-16 नहीं है आपकी है 294 323 506 324-34 चालान क्रमांक 29 डेटेड 25/7/99 लेकिन प्रकरण क्रमांक 43/26/7/99 दर्ज है सर उसमें सजा नहीं पड़ी है मैंने एफिडेविट फाइल किया है नहीं आपका एक्विटल का ऑर्डर दिखा दीजिए जी सर एक्विटल का ऑर्डर सर मैं पेज नंबर 11 देख लें सर एनेक्सर P1 हाँ दिखाइएगा पेज नंबर 11 एक्विटल का ऑर्डर है ये आपका नहीं सर उसने एफिडेविट दिया था एफिडेविट से नहीं होता 6वीं लाइन एफिडेविट से नहीं होता 6वीं लाइन में सर इस विषय में नहीं होता भाई अपीलार्थी तेजराम द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी भी न्याय विचार नहीं सील्ड ऑर्डर डेटेड 21/4/2017 पास्ड बाय लर्नेड एडिशनल कमिश्नर नर्मदापुरम डिवीजन नर्मदापुर होशंगाबाद whereby learned additional commissioner has allowed appeal number 354/appeal/2015-16 passed by Shri Gabal Ram, private respondent number 5. may be granted time to file acquittal order, my lord. Because I have given affidavit that I have not been convicted. ठीक है चलिए क्या लिखा 5. Full stop. Brief facts of the case are that Gabal Ram and Tej Ram are real brothers. Lastly, I would like to pay, my lord. They are son. Only 2 days time be granted. They are son of Raja Ram. They both had applied for the post of village Kotwar for village Chirkhana. नहीं उसका तो उसकी एप्लीकेशन नहीं थी गबल राम की हाँ ठीक है एज अप्लाइड मत लिखो लिखा बोथ आर सन्स ऑफ इतना राजा राम ठीक है राजा राम हु वाज कोटवार died on 11/3/2014 thereafter Tahsildar issued an advertisement and after calling for the objections and the report of the Patwari and on the basis of character verification obtained from the police station in charge issued an appointment order in favor of Gabal Ram. Full stop. Objections were filed before the Tahsildar Handia, mentioning therein that the objector is educated and he understands the work of Kotwari and he has been helping his father, therefore he be given appointment. Full stop. It was also pointed out that Tejram was termed to be illiterate and therefore it will not be proper to give him the post of Kotwar. Next para. दूसरी तक पढ़ा है सर Such representation, Tahsildar appointed Gabal Ram as a Kotwar. Next para. Being aggrieved of the said order, Tejram had filed an appeal before the sub-divisional officer Harda, which was registered as appeal number 12 year 2014-15 village Chira Khan Tehsil Handia, in which on the basis of an affidavit showing that petitioner was never subjected to any criminal action, was subjected to any conviction, comma, the sub-divisional officer recording a finding that there was no need for any educational qualification, turned down the appointment order issued in favor of Gabal Ram and directed for appointment of the petitioner Tej Ram. Next paragraph. Being aggrieved of the said order, Gabal Ram had filed appeal before the additional commissioner Narmadapuram division Hoshangabad, which has come to be decided in favor of Gabal Ram, hence this writ petition. Next paragraph. Petitioner's contention is that firstly there is no requirement for possessing any educational qualification and merely Gabal Ram possessing higher educational qualification is not a sufficient circumstance to grant appointment in favor of Gabal Ram, and secondly there is no order of conviction and the affidavit
as was filed by the petitioner has been rightly relied on by the subdivisional officer and that was not required to be interfered with by the learned additional commissioner. Next para. Shri T.K. Khatka and Shri इनका नाम डाल दीजिएगा देवेंद्र कुमार गंगराडे supports impugned orders. Next para. A perusal of the provisions contained in section 230 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 reveals that the section 230 deals with appointment of kotwars and their duties. Full stop. The portion in subsection 1 of section 230 before it was omitted by MP Act number 23 of 2018 provided that in the Madhya Bharat region the duties of kotwar under this section shall be performed by the police chowkidars who shall, on the coming into force of this code, be deemed to be kotwars under this section and be subject in all respects to the control of the revenue officers. Next para. Thereafter, section 231 deals with the remuneration of kotwars. Next para. Section 258 deals with the general rule-making power and though there is no document to show that what are the duties of the kotwar, but in the general parlance, kotwar is supposed to be the first informant of any incident taking place in the village to the police chowki. That means nearest police chowki. That means he is the custodian of the civil and other criminal interests of the residents of the village and is a person between the police chowki and the citizens. Next para. When this aspect is examined and taken into consideration, then a person with criminal antecedents for which no order of acquittal was ever produced before the concerned courts, be that of Tehsildar, subdivisional magistrate or of the additional commissioner, merely relying on an affidavit that there is no criminality attached to the acts of the petitioner is not sufficient when additional commissioner has in detail discussed the fact that petitioner is facing a case under section 294, 323, 506, 324, 34 IPC and charge sheet was filed by number 29/25/7/1999 and criminal case has been registered as criminal case number 43/26/7/99, then in absence of any document about a clean acquittal being brought on record, order of the Tehsildar giving appointment in favor of Gabal Ram cannot be faulted with. Petition fails and is dismissed. My lord, there is judgment of Honorable Supreme Court in Pramod Kirar, my lord. दे दीजिएगा, प्रमोद किरार दे दीजिएगा. सर, कहाँ है प्रमोद किरार? जी, उसमें कहाँ है प्रमोद किरार? दीजिए ना. ऐसा थोड़ा मैं भी देता हूँ. नहीं वकील साहब, ऐसा नहीं होता है. सर, अगर आप किसी चीज पे रिलाय कर रहे हैं तो उसको लेके आना. सर, एसडीओ ने ऑर्डर किया था कि इसकी क्रिमिनलिटी भी देखी जाए, क्योंकि उसने एफिडेविट फाइल किया था. नेक्स्ट केस. That has not been considered by any of the authorities. नेक्स्ट केस. Lordship, by way of present petition, Lordship, we are not challenging any specific order, Lordship. Only are seeking a direction to respondent number 126 not to finalize the coal mine provided fund and the pension of respondent number 7, Lordship. Under which provision of law? Lordship, as per Lordship, स्टे है क्या इस केस में? नो लॉर्डशिप. तो अभी तक तो ये पिटीशन इन्फ्रक्चर्स हो गई वकील साहब. 2018 से आज 6 साल हो गए. आपने रिस्पोंडेंट नंबर 7 की आयु 61 साल दिखाई थी
2018 में जी, वो रिटायर हो गया, रिटायर हो गए थे। After that- स्टे न होने के कारण कोई भी जो है रिटायर्ड ड्यूज रोके नहीं गए। आज क्या बचा है इसमें? नहीं, अभी ये कंफर्म नहीं है वेदर दे हैव उनके कंफर्म ना करने से क्या होता है? जी, When there is no stay, the presumption is that all his retiral dues have been paid. Otherwise, he would have approached this court saying that मेरे retiral dues नहीं दे रहे, जबकि कोई स्टे नहीं है। ठीक है, बचा नहीं। I agreed with the lordship. शुक्ला जी तो इसको विड्रॉ कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा। लॉर्डशिप एक वेरीफाई है whether he is getting or not, तो whether it is in purchase or not मतलब ही नहीं है। नहीं, क्योंकि because we have made the several representation before the department that he committed the fraud, lordship, so it could not be finalized. It could not be finalized. There is. बताइए आपने पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? I'll seek instruction regarding that. पास ओवर में रख रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस लेके। He is for. Even he got retired in 31/8/2017, lordship. वो पूछ लीजिए, रिटायरल ड्यूज मिल गए, पेंशन क्या मिल रही है, पूछ के आइए। पास ओवर में रख रहे हैं, 2:15 बजे बताइएगा। लॉर्डशिप oblige lordship. In compliance of 16/2/24 order, my lord, we have filed the affidavit, my lord, yesterday. 16/2. क्या पूछ लिया आपसे? My lord has asked, my lord, that how the penal rent has been recovered from the petitioner when the it has been already recovered from the Sneh Lata. एक सेकंड। जी जी, कहाँ है एफिडेविट बताइएगा। It has been filed yesterday, my lord. हाँ हाँ, 3218। Yes, my lord. हाँ पढ़िएगा। My lord, क्या as लिखा per, आपके? para 5, my lord, हाँ he पढ़िएगा। was remained unauthorized possession in quarter number 57. Who remained unauthorized position? Petitioner was remained पढ़िएगा। unauthorized possession in the quarter number It was submitted 57. that without any awe. She She herself shifted from quarter 26 to 57, and thus she remained in unauthorized possession. It is humbly submitted that the allotment to the petitioner was done by Itna. Thus she remained in unauthorized occupation from 1/5/17 to 17 months, and thus it is for this set period unauthorized occupation that the House Allotment Committee, by invoking, has imposed penal rent on the petitioner. चलिए अब ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर इज एनेक्शर Sir, P5 है sir इसमें. P5 देखिए। P5 में क्या लिखा है? P6 है my lord. P6 देखिए। पीनल इंटरेस्ट, पीनल रेंट के बारे में क्या कहा आपने? P6 में कहाँ का है? P6 में सर ये श्रीमती वर्षा विश्वकर्मा लैब टेक्निकल सेंटर। पीनल रेंट के बारे में कहाँ का है? पढ़िएगा, P7 पढ़िएगा। P7 में आपने कहा कि निम्नलिखित कर्मचारी जो हैं शासकीय आवास में, अवैध कब्जा कर अधिकृत इनका नाम कहाँ है? वर्षा रानी का नाम कहाँ है इसमें? थोड़ा बताएं तो। सर इसमें अरे भाई, वो ऑर्डर तो दिखाएं, कहाँ है वो प्रोसीडिंग, कहाँ है? सर इसमें R1 में भी सीन माय लॉर्ड। R1 इसमें सर विषय अंतर्गत लेख है कि अनाधिकृत कब्जा किए गए शासकीय आवास के प्रकार निम्नानुसार है, जिसमें ये सबसे लास्ट में कहाँ है बताइएगा। आप अपनी मर्जी से कैसे शिफ्ट कर जाएंगे? ये लॉर्डशिप माय सबमिशन इज लॉर्डशिप की बाय वाइड एनेक्सर P1 जी H26 that was ठीक है, वो समझ गए। 2009। आप
एंड 57 नंबर मकान में 57 में कैसे अपनी मर्जी से शिफ्ट कर जाएंगे? लॉर्डशिप आई हैव खुद लिखा है, आपने खुद लिखा है, पढ़िएगा P6 पढ़िएगा। क्योंकि इन 2014 लॉर्डशिप की आई हैव सबमिटेड द रिक्वेस्ट कि हमें ग्राउंड फ्लोर का आपका रिक्वेस्ट करने से नहीं होता है। एंड आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं आउट ऑफ टर्न आप आके सुन लूं, मैं नहीं सुनूं तो क्या आप आके टेबल के ऊपर बैठ जाएंगे? नहीं, तो बस मुद्दे की बात इतनी है, इतना सा इशू है कि you yourself admitted that you had shifted to this house unauthorizedly. H26 was vacated, lordship. H26 was vacated. Then I have shifted and handed over the key to the authority, lordship. उससे नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। And H57 में जब उन्हें हमें की दे दिया, lordship, and regular rent, normal rent I have paid, regularly paid. ठीक है। That was recovered, my lord, the period which he has remained Petitioner's unauthorized. contention is H26 की lordship, they have recovered the final rent. हाँ ठीक है। 2 lakhs something, lordship. 2,34,000 in the affidavit there. The order directing her to pay penal rent for unauthorized use of house H57. They have not issued the regular orders, In lordship, view for of recovery. such facts, the order of recovery annexure P7 is under challenge, as has been passed by the Dean of Netaji Subhash Chandra Bose Medical College, Jabalpur. Next para. In pursuance of the last order, Dean Netaji Subhash Chandra Bose Medical College has filed her affidavit with IA 3218/24, pointing out specifically that the petitioner was allotted house number 57 on 1/10/2018. Sorry, on 27/10/2018, and she remained in unauthorized occupation of quarter number 57 from the period commencing from 1/5/2017 to 1/10/2018. Full stop. It is not in dispute that earlier petitioner was in possession of house number 26. Full stop. She had made an application for shifting to a ground floor quarter, but it is also true that she was never allotted this house number H57 till order dated 27/10/2018. Therefore, her shifting from H26 to house number 57 on her own volition will be an act of impropriety. Full stop. However, looking to the fact that petitioner has already paid normal rent for house number 26, which is of the same description as house number 57, this petition can be disposed of, relegating him to make a representation to the Dean Netaji Subhash Chandra Bose Medical College for her consideration and taking appropriate decision. Full stop. 15 दिन 60 दिन this court has not expressed any opinion on the merits. Number 42. Your Lordship. Lordship, this matter pertains to the salary issue, Your Lordship, the petitioner's matter. किस चीज का सैलरी चाहिए? Lordship, I was working in a district cooperative bank, Your Lordship. As per annexure P2, my lords, I was appointed by the annexure A1. And after that, Your Lordship. Pleadings पूरी है, इसको तो फाइनली सुनना पड़ेगा वकील साहब. Lordship, छोटा सा इशू है, my lords, only. 5 मिनट में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा. सही है. जी. Both the parties should be able to complete it in 5 minutes. Yes, yes. Totally, that is not possible, not to be fair enough. Why? Because the petitioner was appointed under scheme of NABARD. Now pleadings, only the bank has filed reply, the state government has, NABARD has not filed reply. अच्छा. If your lordship, the fact may be gone into when if my lord is, in the opinion the state or the NABARD is required to file reply, then. Why should I form an opinion? Consequences will follow. They have chosen not to file reply. Consequences will follow. Sir, may I, Lordship? Lordship, as per annexure 8, P8, my lords, they have increased my time period, Lordship, for 1 year, and now they are not issuing my salary, and now not NABARD has issued, Lordship. District Cooperating Bank have issued, my lords.
You are for the district cooperative bank? The cooperative bank. अब बताइएगा आप आपने ये जो The document which they are referring is the recommendation for extension of time. So- No, we do not dispute that we have recommended that the time. whether should it be was extended. whether it was extended or not. It was that is remaining pending with the state government as well as NABARD. The state government and the NABARD, who are respondents in the case, have not filed their reply. In time. It is serious matter that state has chosen not to file reply, though petition is pending since 2019 and notices were issued on by order dated 5/2/2019. Thus, similarly, NABARD has also chosen not to file reply. In fact, NABARD is not represented before the High Court. Represented है नहीं है. Is not represented before the High Court. Therefore, subject to cost of rupees 10,000 each to the state government and NABARD if they choose to file their reply. 30 days time is granted to file reply. List after 30 days. Hello, obliged. What's it? I had to continue. I had to continue. Obliged. 4 weeks time. Huh? 4 weeks time. हाँ 30 दिन का 4 हफ्ते से ज्यादा है 2 दिन. Lordship, sorry, Lordship. In serial number 41, Lordship, की actually stay was there. So till the decision, no. ठीक है चलिए. Next case. My lord, in this case, the petitioner is challenging the impugned order and adjourned P1 by which the respondents have rejected the claim of the petitioners in respect of regularization on the two ground, my lord. And adjourned P1, my lord, which is under on the ground that in the society, jurisdiction of the Multai society, no vacant post is available, my lord. Second ground is the petitioners have not completed the 10 years of service, my lord. इसलिए उमा देवी में कंसीडर नहीं किया जा सकता. In fact, my lord, in this case, my lord, सुनेंगे इसको फाइनली सुनेंगे अजीत जी. मोशन कोई में पास की डेट दे दें. हाँ ठीक है. Petition is admitted for final hearing. List for final pleadings are complete. List for final hearing in the week commencing 15 जुलाई 2024. 15 नहीं 29 जुलाई केस के 2024. पहले कारण के सभी रिटायर हो जाएंगे. कोई बात नहीं. चलिए नेक्स्ट केस. 44. Assembly. The matter pertains to appointment on the post of Anganwadi Sahika. रिकॉर्ड है आंगनबाड़ी सहायिका का. लिखिएगा. Matter pertains to appointment of Anganwadi Sahika. Record of the appointment process is necessary. Let record be called within 4 weeks. List thereafter. It's on the last date, the my lords have directed respondent number 3 to file their return, my lord. जी. Two was directed by the state government to make the payment. जी. We have calculated that in 15 days we will make the payment of. देखिएगा. My lords, interest is not being paid for that period, my पहले lords. मूल तो आ जाए. अभी आप इतनी जल्दी कर रहे हैं. कोई फाइल आई नहीं है आपके हाथ में. आपको फीस पहले चाहिए. My lords, we have paid for that also. प्लीज वेट करिए. Petitioners by Shri Takit Malik, Shri H.K. Upadhyay submits that he has instructions to inform this court that within 15 days, salary of the petitioner will be paid to him. Post-retirement dues. Post-retirement dues. Post-retirement salary, post-retirement dues will be paid to him. Full stop. Needless to say that petitioner attained age of superannuation on 2001. My lords, VRS. He obtained VRS in 2001. Criminal trial में चले गए थे 2019 में he has been Acquitted. In 2019, he has been acquitted. then he approached us. Therefore, respondents will be liable to pay interest at the rate of 8% on the retirement dues at least from 27/4/2019, that is the date of the acquittal till the date of actual payment. Let payment be made along with aforesaid interest within period of 15 days in above terms, and on the undertaking of Shri Upadhyay, petition is disposed of.
Number 46. Manoj, the matter pertains to termination by way of stigmatic order. Manoj, your lordships have considered similar petitions. क्या है? It's termination of Rozgar Sahayak, Manoj. This is without inquiry, Manoj, following division bench Malkhan Singh, that they need to follow the procedure, Manoj. ये कर दीजिएगा, सेम ऑर्डर कर दीजिएगा, रख दीजिए उसमें. Yes, sir. In all these. दोनों 40 पूरा तीनों. Yes, your lordship. तीनों कर दीजिए, चलिए. Manoj, in the third matter, Manoj, notices were issued to me, but Manoj, despite my communication that I am not well, they still continued with the inquiry, Manoj. So I just wanted to bring it. इसको अलग करिएगा. 46.2 को भी डिस्पोजल मत दिखाइएगा. इसमें रिप्लाई आ गया 46.2. रिप्लाई आ गया. 46.2 का अलग करके, since notice was issued to the petitioner, this matter is different. It is to be adjudicated on its own merits. Therefore, list this case for final hearing in Part B of the cause list as per its term and seniority. Manoj, आने दीजिए उसको. चलिए. Number 47. Your Lordship, in this matter, I am seeking 2 weeks' time to file rejoinder. Such return has been filed by the state. आपका शुभ नाम डाल के लिखिएगा. Praise for and is granted 2 weeks' time to file rejoinder. List after 2 weeks. Also, if this matter may be admitted, it may be kept in the final hearing also. क्यों? Stay है क्या? No, Your Lordship. हाँ? No, Your Lordship. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its. क्या है क्या? Matter क्या है? Your Lordship. I am appearing as a proxy counsel on behalf of नहीं तो मैंने बोला क्या मैटर क्या तो समझे तो. Your Lordship. Recovery of an amount of rupees 1 lakh. Department inquiry was conducted and it was. तो फिर आपको बताना पड़ेगा क्या डिफॉल्ट इनका. सुनिएगा, रिटर्न कब फाइल हुआ था? 2021 में हुआ था. प्रेयर फॉर रिजॉइंडर इज रिजेक्टेड. रिटर्न वाज फाइल्ड ऑन 28/6/2021. फॉर मोर देन 2.5 years, petitioner has chosen not to file reply or at rejoinder. Therefore, right to file rejoinder stands closed. Next, list this case for final disposal in the week commencing 22 April 2024. We will be filing the No, there is no need to file it now. चलिए. Falgun Yadav. Falgun Yadav. DPC record is awaited, sir. Awaited मतलब? Sir, it has been requested to the IS department to provide. Within 3 days, it will be available. देखिएगा, DPC record is still awaited. Call for the DPC record and list thereafter. List in the week commencing 8 April 2024. Lordship, in this case, notices to the newly added respondent were issued in the month of October. देखिएगा, If they were notices were issued to the newly added respondents in the month of October. Reply, service and reply is still awaited. reply of state government. अरे भाई, private newly added respondents का बोल रहे हैं. Let newly added respondents file their reply if they so desire within 4 weeks. List thereafter. Number 50. इसमें कहा था लंच के बाद शुरू करें कि अभी हो जाएगा? नहीं, अभी होगा नहीं. हैं? अभी नहीं हो पाएगा. लंच के बाद देखते हैं. पास ओवर में रख हैं? हाँ, कैसे करते हैं भाई? ठीक है. नेक्स्ट केस. Number 55. जी, बताइए.
My lord, 1 week adjournment is spread. We have to seek some instructions from the client. Next week इसको कर देंगे. You are appearing for which? Respondents लिखिएगा. 2 and 3. Shri Miss Kaushiki Sharma for the petitioner. Shri Amit Mishra for respondent number 1. Shri Arpit Agrawal for respondent number 2 and 3. Shri Arpit Agrawal prays for short adjournment to seek instructions from respondent number 2 and 3 on his request list in the week commencing 11 March 2024. Number 52. None for the petitioner, none for the respondents. Readings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. Next case. Sir, 52 number में भी टिकट पास हो रहा. नहीं, आप किसके लिए हैं? Sir, we are for respondent. हाँ. R1 sir. Later on आपका शुभ नाम डाल दीजिएगा. Proxy counsel शुभ चौधा. शुभ चौधा. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट केस. Earlier dated, the state has taken time to file a reply. The reply has been filed. The copy may be supplied. कॉपी आपको नहीं मिली अभी? No, sir. श्री आपका शुभ नाम? Anunay Rai. Anunay Rai submits that state has filed its reply on 2020. 23/2/24 without supplying him a copy of the reply. That copy of the reply we supplied during the course of the day with acknowledgement in the registry. Rejoinder, if any, may be filed within 2 weeks list thereafter. 113 113 लिख लीजिएगा. Place for withdrawal, same is dismissed as withdrawn. 55 may be taken in the next week, Lordship. क्या हो गया? Item number 55, Mr. Rahul Tripathi is the arguing counsel, Lordship. कुछ family problem आए थे कोर्ट लेकिन उनको वापस जाना पड़ा. बढ़ा दीजिएगा 55 नंबर को. श्री इनका नाम डाल के सुनील कुमार मिश्रा प्लेस फॉर एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल डिफिकल्टी ऑफ श्री राहुल कुमार त्रिपाठी केसेस एट जॉन. Item number 56 also, arguing counsel Pratik Jain is not here. हाँ, प्रतीक जैन इज नॉट वेल करके सेम बढ़ा दीजिएगा. लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स. कंप्लायंस ऑर्डर जी कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल किया पर उसमें मिसलीड किया है. आने दीजिए ना, जब आएगा तब बताइएगा. क्या नहीं होता? डायरेक्शन मैटर की लिस्ट में है पर आज वो देखते हैं.
है।